𝐷𝐞𝐚𝐤𝐚𝐫𝐮𝐷 샤샤투베스탄바 𝐷𝐞𝐚𝐤𝐚𝐫𝐮𝐿 샤샤투베스탄바 스탄데잡토주칸 마땅초초조모 친낭툴람장포 낭기실직주고 낭기실직주고 골웨능마빈가 스톤바샵갸투바 스톤바샵갸투바 Namaste and good afternoon, ladies and gentlemen, venerable guests, distinguished practitioners of compassion and seekers of the profound. It is with great honor we gather here today under the auspices of Mahabodhi International Meditation Center in collaboration with Adhyatma Sadhana Kendra to commence a transformative journey towards the embodiment of Mahakaruna or great compassion. Karuna generally refers to compassion or empathy, and Mahakaruna signifies great compassion, emphasizing a deeper and more profound level of empathy and benevolence. The addition of Maha in front of Karuna amplifies the intensity and scope of compassion, suggesting a more expansive and inclusive form of caring for all sentient beings. Karuna encapsulates deep empathy and connects us to the collective human experience and the interconnectedness of all beings, as reflected in Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. It resonates with contemporary urgency, a worldview that champions the imperative of prioritizing shared well-being on a global scale. Today, we convene in the heart of India, the capital in action, New Delhi, a city resonating with the reflections of centuries past and the aspirations of a nation aiming for harmony and unity. The Mahabodhi International Meditation Center had its humble beginnings in one small rented room in Leh City in 1986, when Venerable Bhikkhu Sanghasena realized there was a great need to offer both humanitarian and spiritual services to the people of Ladakh. From there, the center moved to the main Devachan campus in Choglamsar, which is on an impressive 200 acres of desert land in 1991. Against all odds, with no water, no proper roads,
just harsh desert land through the tenacity, compassion, and resourcefulness of Venerable Sanghasena and his team, the Mahabodhi Devachan campus began to grow and his dream slowly became a reality. It is a non sectarian, Buddhist, non profit charitable organization based in Ladakh, which has become the launchpad for dharma based activities and social outreach programs for vulnerable communities in the region. With the continued support of like minded sponsors from all over the world, we hope to be able to contribute our part towards this goal by serving the people of Ladakh. Adhyatma Sadhana Kendra, set up in 1965 by Akhil Bhartiya Anuvrat Nyas, is a living tribute to visionary Yuga Pradhan Ganadhiprati Shri Tulsi. The objective of the Kendra is to provide a healthy and serene ambience to aspirants and practitioners of spirituality, including yoga, meditation, naturopathy, and therapies. Adhyatma Sadhana Kendra has been functioning as the Preksha Dhyan Center in the National Capital Region of New Delhi since 1975. Training is provided at the Kendra for yoga, Preksha meditation, and Kayotsarga to a vast number of meditation seekers from around the world. The Kendra is located on a scenic and peaceful campus near Chhatarpur Temple, which makes for an effective retreat for spiritual, physical, and emotional well-being. The upcoming program promises to be a journey through diverse expressions of compassion, where the ideals metamorphose into tangible, transformative experiences. Ladies and gentlemen, brace yourself for enlightening sessions that will propel us from contemplation to engagement, knitting the gap between the words and the deeds in our pursuit of compassion. We now extend a gracious invitation to our esteemed delegates and venerable guests to join us for lighting the lamp. Now, we will be having prayer of compassion. Good afternoon, everyone. I'm 𝐷𝐸𝐿𝐴𝐚 and I'm here to read out the prayer of compassion, which was composed and conceived by our most revered Guruji, Venerable Bhikkhu Sanghasena. And it goes like, O Lord, the embodiment of compassion and wisdom,
Please accept our most reverential salutation at your lotus feet. Kindly bestow your blessings on us to remain always a source of water for the thirsty, a source of food for the hungry, a source of healing for those who are ill, a source of light for those in darkness, a source of companionship for those who are lonely, a source of protection for those without protection, a source of help and friendship for all in need, a source of crutches to the broken limbs, a source of parental love and care for the orphans, a source of shelter to the homeless, a source of asylum for those who have no safe place, a source of warmth of real love and compassion to those abandoned in coldness of war and hatred, a source of becoming a messenger of peace, a source of becoming an ambassador of compassion. May the Buddha be at our head, may the Dhamma be in our hearts, and may the Sangha be at our sides to protect and guide us always. May all enjoy real peace, real happiness, and real harmony. Thank you. Now, we shall be having prayers by Venerable Sangha members from Vietnam for world peace. Good afternoon, everyone. We are Vietnamese Buddhist nuns, men and nun. We are studying in Delhi, the Subati and 𝐷𝐸𝐻 Buddha University. Under his request, Bhattaji Sanghasena, we are come here and we had a short previous for Mahakaruna. Now we are ready. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn bốn ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hạnh Ra Đảnh Nam Bà La Yên Đệ Tăng Bằng Đa Gia Bồ Đề Tăng Đòa Bà Gia Ba Tăng Đòa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia Âm Tăng Bà Đa Bà Đề Đô Tăng Đa Đa Tòa Nam Mô Bà La Yên Đệ Tăng Bà Đa La Đà Bà Nam Mô Na Ra Trần Đề Đề Ba Bà Na Ra Mê Tăng Bà Tha Độ Chu Bà Tha Tề Dòng Tăng Bà Tăng Đa Bà Đa Bà Gia Ba Bà Đà Đầu Đa Địa Tha Đa Đến Như Đề Ma Bồ Đề Tăng Đỏ Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Đề Đà Dầm Cô La Yom Ma Đà La Bà Sa Gia Đế Ma Bà Sa Gia Đế Đà Đa Gia Đà Gia Đà Ma Ra Mô Đế Lệ Tăng Na Tăng Na Tăng Đa Lại Bà Sa Gia Ho Lo Đề Ta Đa Đề Tô Rô Bồ Đề Gia Di Đế Gia Na Đa Trần Đề Sa Ni Na Bà Gia Bà Na Ta Bà Ha Ta Đa Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ha Tấn Đa Chuông Đế Tâm Phật Đa Gia Ta Bà Ha Na Đa Trần Đề Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tấn Đa Tăng Nam Mô Thế Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha Ta Đa Gia Ta Đa Gia Ta Bà Ha Ma Đà Ma Yên Ta Đa Gia Ta Bà Ha Na Đa Trần Đề Bản Đa Đa Gia Ta Bà Ha Ma Bà La Tăng Ni Đa Gia Ta Bà Ha Nam Mô Hạnh Ra Đảnh Đa Gia Gia Nam Mô A Di Đà Đa Gia Ta Bà Ha Tích Điện Đô An Đa Đa Bà Đa Gia Ta Bà Ha Ta Điện Đô
đại an thiên công hành đà đa và đà nhà ta bà chúng sanh vô biên thể hiện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thế nguyện học thương thế nguyện thành từ quý Phật đưa nguyện chúng sanh thế giới đại đạo Pháp vô thượng tâm từ quý Pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập đi huệ như hải từ quý tăng đưa nguyện chúng sanh đại chúng nhân thiện vô ngại nguyện đem cùng đấng này hướng về khắp tất cả đệ tử sanh điều trọn thân phân đạo. In pursuance to promote world peace, Mahabodhi International Meditation Center and Mahakaruna Foundation have been organizing Mahakaruna Diwas celebrations since 2013. The aim of Mahakaruna Diwas is to raise public awareness and recognition of the priceless value of unconditional, universal, and all-inclusive great compassion, not only for human beings, but also for the whole existence, going beyond all kinds of boundaries of nationalities, religions, races, and colors, thus opening the heart and embracing all. This phenomena alone can save the world and the humanity to combat further chaos. We shall now watch the screening of a short documentary on Mahakaruna Foundation. Meditating and living a life of seclusion like a typical monk, but the desire to spread the teachings of Lord Buddha led him to establish the Mahabodhi International Meditation Center, which has been undertaking spiritual, humanitarian, social, cultural, and environmental projects for the last 3.5 decades. His untiring efforts has bit by bit turned the 250-acre barren land of 𝐸𝐧𝐴 campus in Leh into a flowering oasis, home to monks and nuns, elderly, destitute, differently abled, and Bodhi is symbolic of compassion. Those who visit Mahabodhi, forgiveness, love and peace, thus realizing 𝐵 Bhikkhu Sanghasena vision of spreading Buddha's teachings of universal compassion and loving kindness. Even after doing so much for society, 𝐵 Bhikkhu Sanghasena's heart, mind and soul were still restless. The Mahakaruna Foundation is a non-profitable organization with the sole vision of reaching out to people from all walks of life, to motivate them to serve humanity through the practice of Mahakaruna, meaning universal compassion. I request the dignitaries to stay on the dais for the group photograph. हम शिक्षा के बगैर नहीं होगा, तब जाके कहेंगे एक ग्लोबल हार्मोनियस फैमिली, तब हम कहेंगे महाकरुणा ट्रांसलेट हुई है इन एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन.
The aim of the organization is to spread the message across all faiths and beliefs of putting universal compassion, kindness, forgiveness, and love into action. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा गया कि आज के समय का सबसे बड़ा संकट क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि सबसे बड़ा संकट है कि आज लोगों के भीतर करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है। ये महाकरुणा दिवस का आयोजन जन जन के भीतर में करुणा का भाव जागृत हो। Just yoga is not enough unless and until we put into practice. It is time for us, what we have heard, what we have read, what we know, to put into action. That is important. That's why we call it Mahakaruna Diwas, compassion in action. With this simple yet profound message, Bhikkhu Sanghasena set out on a journey of conducting Energies and all this. The journey so far has been daunting, yet fulfilling. And Bhikkhu Sanghasena is determined to continue this journey of spreading the message of Mahakaruna in action, far and wide, till each human being is sensitized to Mahakaruna, irrespective of their beliefs, social and economic stature, nationality, race, religion, and gender. I would like to welcome Mr. Anil Kumar Jain, Director, MIMC, Delhi office, to deliver his welcome address. Respected distinguished dignitaries, eminent guests and participants, it's my pleasure, honor and privilege to extend warm welcome to all of you on behalf of Venerable Bhikkhu Sanghasena ji, the family of Mahabodhi International Meditation Center, Param Pujya Ugra Vihari Tapomurti Muni Shri Kamal Kumar ji, and the family of Adhyatma Sadhana Kendra in today's celebration of Mahakaruna Diwas 2024, which is being organized jointly by Mahabodhi International Meditation Center and Adhyatma Sadhana Kendra. As far as MIMC is concerned, the organization motto is meditation and compassion in action. And this MIMC is a NGO which was established in 1986 by Bhikkhu Sanghasena on a 250-acre stretch of barren land. It is a desert land actually. And during the last 37 years, this barren land has been transferred into a heavenly-like oasis. Today, Mahabodhi International Meditation Center has grown into one of the biggest NGO in Ladakh region and is well known in India and abroad. It's meditation, yoga, spiritual teaching, education, health care of elderly and differently abled persons, humanitarian activities at MIMC attract large number of peace-loving from around the world. And this could happen only because of the untiring effort of Bhikkhu Sanghasena, who has distinguished himself as a charismatic and highly energetic social and spiritual reformer. MIMC, founded by him, is now more than an organization. It is a movement for change. As far as national and international recognitions are concerned, Bhikkhu Sanghasena was awarded Prime Minister Yoga Award in the year 2022. And the most, I think, the happy news to all of us is when I was traveling with the Bhikkhu Sanghasena today in the morning while coming to this office, we came to know that government of Myanmar has conferred him with one of the highest award of the country. And I will not mention because His Excellency, Ambassador of Myanmar is here, so he will throw more light on this award. But this is the award just we came to know in the morning only. And we have here, यहाँ पर हमारे साथ हैं उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी, और एक महान व्यक्तित्व, और शायद उनका परिचय की ज़रूरत नहीं है, और शायद मैं अपने
आपको इतना योग्य भी नहीं समझता कि उनका परिचय मैं दे पाऊँ। तो मैं शिल्पा जी से रिक्वेस्ट करूँगा अपने इसके बाद कि वो आपको बताएंगी मुनि जी के बारे में। और जहाँ तक मेरा सवाल है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप जैन साहब आप कैसे लद्दाख पहुँच गए या भिक्खू संघसेना जी के साथ शामिल हो गए। और मैं ये कहूँगा कि 2016 में जब मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो शायद ईश्वर खुद भिक्खू संघसेना जी के रूप में मुझे सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का दिल्ली में। और पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कल सुबह हमारे साथ लद्दाख चलिए। इट वॉज़ मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से मुझे लद्दाख जाना पड़ेगा, बट मैं लद्दाख गया। और लद्दाख जाने के बाद जो मैंने देखा, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। मुझे बिल्कुल लगता था जैसे सपना हम लोग देख रहे हों। एक आदमी, एक व्यक्ति लद्दाख जैसे जगह, जो कि आप सोच सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर -30, -35 होता है, कोई चीज़ पैदा नहीं होती, वहाँ एक सिंगल हैंडेडली एक व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है। वहाँ पर स्कूल है 10+2 रेजिडेंशियल स्कूल है, और ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी सपने में सोचा भी नहीं हुआ कि हम पढ़ेंगे, और आज वो पढ़कर देश में नहीं विदेश में भी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। हमारा सबसे बड़ा ओल्ड एज होम है, हॉस्पिटल है, और बहुत सारी जो स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा काम तो सिर्फ भिक्खू संघसेना ही कर सकते हैं, शायद मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना सारा जीवन भिक्खू संघसेना जी के साथ ही गुजारूंगा, और उसी समय से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। और जो मेरी लाइफ, मेरा जो जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया था एक समय में, जो है आज मैं बहुत अति व्यस्त हूँ। तो मैं बहुत अपने दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत एक अहम रोल किया। और जहाँ तक आज के प्रोग्राम का सवाल है कि MIMC का जो महाकरुणा है, इट इज़ एट ए वेरी कोर वैल्यू ऑफ ऑल सोशल, spiritual and humanitarian activities, and we celebrate Mahakaruna Diwas. And I would also like to tell you that Mahakaruna Diwas, or today's, that is 7th of January, is the birthday of Bhikkhu Sanghasena ji also. So Mahakaruna coincides with the birthday of our most respected Guru. And on this day, we recollect and strive to realize personally and collectively the inspired guiding principles of great compassion. We have celebrated this event in various parts of India and many countries overseas, like Europe, South Asian countries also. And we have got tremendous response. And this response is growing exponentially year after year. We know that today world is passing through an environmental crisis. Everywhere prevails the atmosphere of fear, anger, despair, hatred, leading to profile, violence, war, and all those things that we know. Now, compassion is not a new word for the mankind. It is the core value of all religious and spiritual practices. जैसे मैंने कहा कि मैंने जैन धर्म के बारे में भी बहुत पढ़ा है, और अब जो है बिल्कुल एक से ही हैं। और कंपैशन के बारे में थोड़ा सा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कंपैशन इज़ एन ऑल इंक्लूसिव टर्म. It has to be adopted in all aspects of life. Secondly, compassion is not only due to the own fellow being, it is due to the all element of the nature also. And thirdly, because the compassion differs from other like sympathy, pity, concern, etc., because it involves a component of action also. And now, because I'm a student of science and I've read a lot of things about compassion also, आपको ताज्जुब होगा कि अब जो आज की साइंस में और जो रिसर्च हुई हैं, उन्होंने कहा कि कंपैशन करने से हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं, और कहते हैं कि कंपैशन करने से आपका जो एंग्जाइटी है या जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, एंड इट मेक्स यू हैप्पियर इन जनरल एंड लिव लॉन्गर. एंड देयरफॉर
The act of compassion can change your life forever. And Mother Teresa once said that be like a flower that gives fragrance even to the hand that crushes it. जो हाथ से हम मसलते हैं फूल को, वो हाथ को खुशबू देकर जाता है. और ये जो करुणा की बात है, और अभी मेरे साथ जो घटना हुई, मैं अभी गाड़ी से जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की एक बच्चे को गोद में लिए हुए जो एक भीख मांग रही थी, आई मेरे पास कि सर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मैं और ये मेरा बच्चा बहुत भूखे हैं, कुछ खा लेंगे, इनका पेट भर जाएगा. उस समय जल्दी में था, मैंने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, बट ये 2 बिस्कुट के डिब्बे हैं, आप मैं अपने खाने के लिए ले जा रहा हूँ, आप खा लो दोनों जने, एक तुम खा लो एक तुम खा लो. तो पता है उसने क्या कहा, आपको बहुत ताज्जुब होगा. उसने कहा सर आप 2 मत दीजिए हमें, 1 दीजिए, एक अपने पास रख लीजिए, एक हम खा लेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों हमें दे देंगे तो आप भूखे रह जाएंगे. ये करुणा की पराकाष्ठा है. और जिस दिन हम सबके मन में ये भाव आ जाएगा तो लाइफ अपने आप ही जो है वो स्वर्ग बन जाएगी. और आज का जो प्रोग्राम है, मैं उसके लिए ख़ास तौर से केसी जैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हुआ सब उन्हीं की वजह से हुआ. उन्होंने जितने एफर्ट्स किए, जो सुविधाएं हमें प्राप्त की, हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने बहुत अपने मेहनत करके दिन रात हमारे साथ लगकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सारा श्रेय जो है वो उन्हीं को जाता है. एंड lastly, I would like to convey my sincere thanks to all our distinguished dignitaries, guests and participants for sparing your valuable moment to attend this memorable event. Thank you so much. Thank you, sir. I would now like to welcome Shri K.C. Jain, Director, Adhyatma Sadhana Kendra. श्रद्धेय मुनि श्री कमल कुमार जी के चरणों में सविधि वंदन. श्रद्धेय भिक्खु संघसेना जी, विभिन्न परंपराओं के प्रतिनिधिगण, हिज एक्सीलेंसीज, बंधुओं बहनों, अध्यात्म साधना केंद्र की ओर से इस परिसर में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. I would like to thank Mr. 𝐸𝐞𝐚𝐽 for such kind words. जैसा कि शुरू में परिचय में कहा गया, लगभग 60 वर्ष पूर्व स्थापित इस केंद्र की स्थापना इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी कि शायद आप में से बहुत लोगों ने इस बात को उतने गौर से नहीं देखा हो कि जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 के 24 तीर्थंकर की मूर्ति केवल आपको एक ही पोज में मिलेगी, वह है ध्यान अवस्था. वो चाहे खड़े हों और चाहे पद्मासन में बैठे हों, परंतु वे केवल ध्यान की अवस्था में ही आपको उपलब्ध होंगे. दूसरी किसी भी पोज के अंदर किसी भी जैन परंपरा के तीर्थंकर की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी. दूसरा यह भी है कि जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक जितने भी केवल ज्ञानी हुए, तीर्थंकर बने, उनका कैवल्य प्राप्त करने का साधन मात्र ध्यान ही रहा. यह अलग बात है कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व तक यह ध्यान की परंपरा हमारे साधु परंपरा में लगभग सिमट कर रह गई थी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसे सरल बनाकर खोजकर पुनः सबके सामने प्रस्तुत किया और उस परंपरा का नाम दिया प्रेक्षा ध्यान. एक और बात आपके साथ में जोड़ना चाहूँगा. विपश्यना बौद्ध परंपरा की ध्यान परंपरा के नाम से जाना जाता है. विपश्यना उतना ही शब्द जैन परंपरा में भी है. चूँकि विपश्यना शब्द बौद्ध परंपरा में बहुत प्रचलित हो चुका था, तो इसलिए प्रेक्षा का मतलब भी है गहराई से देखना, वही अर्थ है जो विपश्यना का अर्थ है. तो इसलिए इस शब्द को प्रेक्षा ध्यान के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया. हाँ, प्रक्रिया में अंतर है और प्रक्रिया में लगभग हर ध्यान की परंपरा में अंतर है. फिजिक्स में अंतर नहीं होता है. ऑस्ट्रेलिया की फिजिक्स हो या अथवा अफ़गानिस्तान की, उसके इंटरप्रिटेशन में, उसको समझने में, उसके उपयोग में अंतर हो सकता है,
परंतु उसके मूल सिद्धांत में अंतर नहीं हो सकता। हर परंपरा अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करती है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत साहित्य का अध्ययन किया है, कि केवल बौद्ध परंपरा में ध्यान की 72,000 परंपराएं हैं। तो इस प्रकार से जैन परंपरा में भी अनेक हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान उनमें से एक प्रमुख परंपरा है। और यह केंद्र उसी परंपरा को आगे जन जन तक पहुँचाने के लिए स्थापित किया गया था। लगभग 30 वर्ष पहले जब यह अनुभव सामने आया कि केवल ध्यान से किस प्रकार से हार्ट के पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। हमारे पास वो लोग हैं जो 30 साल पहले ऑपरेशन करवाने आए थे, किसी कारण से ऑपरेशन नहीं हो पाया और फिर ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर हमारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। डायबिटीज़, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, वी ऑल नो दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इन सब का जब हम यहाँ प्रयोग करते हैं तो हम ये चमत्कारी परिवर्तन देखते हैं। हमारे पास तो कैंसर के ठीक होने तक के केसेस भी हैं, परंतु केंद्र की स्थापना का मूल उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना नहीं है। मूल उद्देश्य तो अपनी अंतरात्मा को जागृत करना है। और उसके एक जीवित उदाहरण मुनि कमल कुमार जी, उग्र विहारी तपोमूर्ति, यह संबोधन उनको, यह भारत रत्न, यह पद्म विभूषण उनको आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु ने दिया है। आपको आश्चर्य हो सकता है, 45 वर्ष से अधिक हो गए मुनिश्री को 2 दिन लगातार भोजन किए हुए। 2 दिन लगातार उपवास तो हो सकता है, लेकिन 2 दिन लगातार भोजन नहीं किया। और शायद आप जानते हैं कि जैन परंपरा में यदि मुनिश्री आज सूर्यास्त से पहले भोजन लेंगे और पानी लेंगे, भोजन का मतलब पानी भी शामिल है, तो फिर उसके बाद सूर्योदय के समय परसों के बाद ही लेंगे, उससे पहले नहीं ले सकते हैं। और ऐसे करते हुए मुनिश्री को 45 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीच में काम भी छोड़ देंगे। मैं बहुत चुनौतीपूर्ण शब्दों में इस पूरे के पूरे पंडाल को ये कह रहा हूँ कि इनमें से कोई भी व्यक्ति, किरण बेदी जी पुलिस की अधिकारी रही हैं, टेनिस की प्लेयर रही हैं, कि आप में से कोई भी व्यक्ति मुनिश्री के बराबर उस स्पीड से चलकर दिखा दे और उतनी दूर चलकर दिखा दे एक दिन में 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर उपवास के साथ, तो वह साधना भी मुनिश्री के साथ में चलती है। आप सब लोगों का थोड़ी देर पहले परिचय हुआ। मुनिश्री बोलते नहीं हैं, क्योंकि जब प्रवचन देना होता है या दोपहर के 1-1.5 घंटे के समय जब उनकी विंडो खुली होती है तभी प्रवचन देते हैं। रात्रि को भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। जैन परंपरा में अधिकतम लोग नहीं पीते। यह केवल करुणा का ही उदाहरण है। वह करुणा इसलिए कि जैन परंपरा में शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान नहीं है, चिकित्सा का दान सबसे बड़ा दान नहीं है, भोजन का दान सबसे बड़ा दान नहीं है। सबसे बड़ा दान है अभय का दान, कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब मैं आपकी हिंसा नहीं करूँगा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो जिस क्षण मैंने जल का त्याग कर दिया, जिस क्षण मैंने भोजन का त्याग कर दिया, और अब से लेकर के परसों सुबह तक के लिए जैसे मुनिश्री ने त्याग कर दिया या जितनी देर के लिए कर दिया, उतनी देर के लिए भोजन से संबंधित ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनको मैंने अभय दान दे दिया कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत हैं। यह इस अवधारणा के ऊपर आधारित है कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी असंख्य जीव हैं वे इस वनस्पति के रूप में हो सकते हैं, वे जल के भीतर नहीं जल के रूप में, वे अग्नि के भीतर नहीं अग्नि के रूप में, वायु के भीतर नहीं वायु के रूप में, पृथ्वी के भीतर नहीं पृथ्वी के रूप में। ब्रह्मांड में जितने भी असंख्य जीव हैं उन सब की आत्माएं मेरे और आपकी तरह समान है, और उनमें से किसी कोई भी हिंसा करने का, किसी को भी कष्ट देने का हमें अधिकार नहीं है। तो रात्रि को जब हम भोजन करते हैं तो हम जानते हैं उसमें बैक्टीरिया अधिक पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक हिंसा होगी और हिंसा का मुझे त्याग करना है। हाउ डू आई मिनिमाइज इट? यह उस परंपरा के कारण है कि रात्रि भोजन नहीं किया जाता। इसलिए नहीं कि मेरा पेट का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दैट कुड बी अ बाई प्रोडक्ट। तो जैन परंपरा में जो करुणा की परिभाषा है, मैं अधिकृत नहीं हूँ, आप जीवित प्रमाण हैं और आपका उद्बोधन भी थोड़ी देर बाद हम सुनेंगे। मैं अध्यात्म साधना केंद्र की ओर से आप सभी का पुनः पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि यह भवन उन सब संस्थाओं के लिए, उन सब कार्यकर्ताओं के लिए, उन सब महानुभावों के लिए खुला है
जो आकर के इस प्रकार से करुणा का, अहिंसा का, मैत्री का, सहिष्णुता का, संयम का विस्तार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं। यह संस्था उनकी सहभागी बनकर, सहयोगी नहीं सहभागी बनकर अपने आप को धन्य अनुभव करेगी। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद केसी जैन साहब। और जैसे मैंने कहा था कि जो मुनि महाराज हैं, उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी, मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता कि मैं खुद परिचय दूं उनका, खुद उनके बारे में बताऊं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा जी, शिल्पा वैद्य जी यहाँ पर हैं, वो शायद उनके बारे में आपको कुछ बताएंगी। Very good afternoon to all. करुणा के अनुपम स्रोत भगवान महावीर को नमन। साधना के प्रखर सूर्य, संयम के शशिधर, करुणा के सागर आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में भावभीनी वंदना। उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के चरणों में शत शत नमन। काफ़ी कुछ बातें आपको केसी जैन साहब ने बताई, लेकिन मैं मुनि श्री के परिचय में कुछ बातें और आपको बताना चाहूँगी। मुनि श्री हमारे राजस्थान के एक छोटे कस्बे गंगा शहर से आते हैं और केसर देवी और रतनलाल जी वैद्य उनके माता पिता का नाम है। उन्होंने 52 वर्ष पहले 52 years ago ही इनिशिएटेड हिमसेल्फ इनटू दीक्षा, और तेरापन धर्म संघ के जो नवम आचार्य, एक बहुत ही दूरदर्शी आचार्य हुए, आचार्य श्री तुलसी, आप सब ने उनका नाम सुना होगा, उनके कर कमलों से मुनिश्री की दीक्षा हुई। और मात्र 7 वर्ष की दीक्षा के बाद ही उन्होंने इस तप का शुभारंभ कर दिया, जिसकी बात अभी केसी जैन साहब आपको बता रहे थे। इस तप में इंसान 12 घंटे के भीतर में, और इसमें भी सिर्फ 2 ही बार भोजन करते हैं, और उसके बाद में 36 घंटे वो कुछ भी खाते नहीं हैं। उसके अलावा दिन में 10 से 12 घंटे के लगभग मुनिश्री मौन की साधना करते हैं। और इन सब को देखते हुए हमारे आचार्य श्री ने उनको तपोमूर्ति का संबोधन दिया। आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं, एक जैन मुनि कभी व्हीकल का प्रयोग नहीं करते, वो पद यात्रा ही करते हैं। और मुनिश्री जैसे कि सिनोनिम हो गए हों लंबे विहार करने के, और एक दिन में उन्होंने अधिक से अधिक 65 किलोमीटर की यात्रा भी करी है। इसीलिए हमारे आचार्य श्री ने पुनः उन्हें एक और संबोधन से नवाजा और उन्हें उग्र विहारी की उपाधि दी। मुनिश्री का नाम कमल कुमार है। कमल भक्ति, सौंदर्य, समर्पण का प्रतीक होता है। कमल को देखते ही हम सब का मन हर्षित प्रफुल्लित हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि कमल की एक और विशेषता होती है, जितना भी कीचड़ में रहे वह कभी कीचड़ में संलग्न नहीं होता, यहाँ तक कीचड़ की एक बूंद भी अपने पर नहीं आने देता। ठीक इसी प्रकार हमारे कमल कुमार जी स्वामी हैं। उनका जीवन देखूं तो जैसे कमल को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान महावीर की वाणी के प्रति समर्पित कर दिया है। कमल की निष्ठा सूर्य के प्रति अगाध होती है। जैसे ही सूर्य निकलता है कमल खिलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे कमल कुमार जी स्वामी अपने गुरु की दृष्टि में ही अपनी रश्मियों को बिखेर रहे हैं और अपनी साधना को एक गुरु की दृष्टि में ही चलायमान रख रहे हैं। आपने इस संसार रूपी कीचड़ को तो बचपन में ही छोड़ दिया, कई 52 वर्ष पूर्व ही त्याग दिया, लेकिन आप उसके बाद भी निरंतर उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं।
कभी साधना की गहराई में बैठ रहे हैं, तो कभी आपके वक्तृत्व और व्यक्तित्व को आप निखार रहे हैं। और ये जो बातें मैं कह रही हूँ, आप आने वाले समय में उनको सुनेंगे और शायद मुझे सही ही पाएंगे। समर्पण की बात कहूँ तो आप अपने गुरु के दिल के शिखरों को छू रहे हैं। सौंदर्य की बात करें, कमल सुंदर होता है, हर किसी के मन को लुभाता है, तो आपका तेजोमय ललाट आपके बाहरी ही नहीं भीतरी सौंदर्य की भी कथा कह रहा है। तो इसी के साथ हम सब कमल कुमार जी स्वामी को आज सुन करके हर्षित प्रफुल्लित अनुभव करेंगे, ऐसी कामना करती हूँ। कमल कमल है मन हर्षाए, कमल कलम है रचनाएं करता ही जाए। कमल मुनि एक बहुत ही सुंदर साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और धर्म संघ को समर्पित करी हैं। कमल कटार भी है, हमें सही राह पर चलने वाली राह, बिल्कुल सटीक सही राह खींच कर दिखाते हैं कि इस पर चलो, ये करना है, ये सही है, ये गलत है। तो जन जन में जागृति लाने का बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। इसी के साथ सभी के प्रति ओम अरहम। धन्यवाद शिल्पा जी। और आज अब हमें सौभाग्य मिलेगा हमारे मुनि कमल कुमार जी का उद्बोधन, आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही एक हमारा सौभाग्य का क्षण है। मैं मुनि जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप कैसे करें? जैसे आपको नहीं कुछ ये माइक ये कर दो। गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवै, सदा ममात्मा विदधातु देवै। सम्मानित मंच, उपस्थित भाई बहनों, आज प्रथम बार ये एक ऐसा समागम हुआ है, ये भी मुझे लगता है 𝐸𝐳𝐧𝐚 के प्रयास से हुआ है। हमारे ये बौद्ध, इनका नाम मैं शायद पूरा नहीं जानता हूं, बौद्ध सेनानी क्या कहते हैं? संघ सेनानी। वास्तव में मैंने देखा इनके अंतर में एक भावना है कि वर्षों से प्रयास है कि जैन और बौद्ध का एक साथ कार्यक्रम हो, तो वर्षों का सपना आज फला है। और ये भिक्षु ऑडिटोरियम इनको सहज मिला है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं, जैन भी भिक्षु। मैं पद यात्रा करते करते जब काठमांडू पहुंचा, खस्सी बाजार में भिक्षु कुटीर लिखा तो मैं पहुंच गया। आगे मैंने देखा वहां तो बौद्ध भिक्षु बैठे। मैं निकल बोला, मुनि जी कैसे आए? मगर ऐसे ही आए। मैंने सोचा भिक्षु लिखा है तो भिक्षु स्वामी के नाम से होगा, मुझे क्या पता कि बौद्ध धर्म में सब संतों को भिक्षु ही बोलते हैं। तो भिक्षु कुटीर लिखा हुआ था, खस्सी बाजार काठमांडू में। गुरुदेव की कृपा से देश विदेश भ्रमण का मौका मिला। और आप जानते हैं कि हम लोग जैन संत पैदल चलते हैं, वो भी किसके कारण? हिंसा न हो। आप टू व्हीलर में चलो, थ्री व्हीलर में चलो, फोर व्हीलर में चलो, नीचे कीड़े, और कभी कभी तो पूछो मना, ओहो मनुष्य भी आ जाते हैं, और पशु पक्षी तो आती रहती हैं। इसलिए जैन संत पैदल चलते हैं। हमने पैदल बिहार किया, एक बार नहीं 2 बार नेपाल जाई आए, भूटान, लंबा चौड़ा हिंदुस्तान, कलकत्ता, बंबई, और वापस कल रवाना हो रहे हैं बंबई के लिए। ये तो सहज रूप में कार्यक्रम बन गया। और पैदल ही चलना है, और वो भी दिन में चलना है, रात को नहीं चलना है। दिन में जब दिखे
मुझे बहुत खुशी है कि भगवान बुद्ध ने करुणा का एक स्रोत बहाया और भगवान महावीर ने अहिंसा का स्रोत बहाया। दोनों समकालीन पर दोनों स्वयं में रहे लीन, इसलिए आज सुंदर खिल रही है सीन। वो अपने आप में लीन रहे, तल्लीन रहे। अभी आपने सुना केसी जैन साहब से, उन्होंने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त किया था। ध्यान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया था। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है आज तो केवल डिग्रियां हैं, ज्ञान नहीं है। इसलिए घर घर में समस्या है, परिवार परिवार में समस्या है। ज्ञान हो तो समाधान हो जाए। आज ये पढ़ाई का लक्ष्य ही बदल गया। पढ़ाई का लक्ष्य केवल डिग्री किस लिए? कि बढ़िया नौकरी मिल जाए और शादी करूं तो बढ़िया छोकरी मिल जाए। यार तेरी लक्ष्य खत्म हो गया। लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई का कि मैं ज्ञान बनूं, ज्ञानी बनूं। जब जीवन में होगा ज्ञान तो जीवन होगा आलीशान, चेहरे पर रहेगी मुस्कान, सफल हो जाएंगे प्लान। सुन रहे हो ना खोल के कान, श्रीमती हो चाहे श्रीमान, हमारे खुले शब्दों में आह्वान, अपने से अपना कल्याण और अपने से अपना नुकसान। हमारा नुकसान भी अपने द्वारा होगा और हमारा कल्याण भी अपने। यही हाथ है, इस हाथ से गिरे को उठाओगे आप समझदार कहलाओगे। यही हाथ है और मिलने वाले को धक्का लगाओगे बुद्धू कहलाओगे, मार खाओगे, आंसू बहाओगे, फिर पछताओगे। हम समय, शक्ति, अर्थ, चिंतन सबका उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। आज दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इतना सा क्यों, एक सामने पानी पड़ा है, पिएंगे इतना, आधा गिराएंगे। बुरा मत मानना, ये क्या है? ये समस्या है। जितनी आवश्यकता है उतना पानी गिलास में ले सकते हैं, लोटे में ले सकते हैं, पर शीशी वाला आधा कौन पिएगा? गिरा दिया जाए। मैं इस चीज को महत्व देता हूं। अभी हमारे केसी जैन साहब ने क्या कहा, पानी में जीव नहीं है, पानी खुद जीव है। आज कहने में कहते हैं कि जल है तो कल है। मैंने कहा महावीर की वाणी में सदा हल है, समस्या है ही नहीं। उन्होंने कहा उसका भी उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मैंने कई मस्जिदों में प्रोग्राम किए, बहुत बड़ी मस्जिदों में, तो मैंने कहा हाथ ऐसे क्यों धोते हैं? तो बोला थोड़े से पानी में काम हो जाए। मैंने कहा बात तो यही है। महावीर ने कहा अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयमो तवो। जहाँ अहिंसा है, संयम है, तप है भाइयों, वहां साधना बोलती है। आज तो हिंसा हो रही है, हिंसा। इसलिए भाइयों ये आत्मा रो रही है। इस धरती पर जीने का तो सबको ही अधिकार है। इस धरती पर जीने का तो सबको ही अधिकार है। अगर किसी को मारा जाए सचमुच अत्याचार। इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। चाहे भाइयों बुढ़ापा आ जाए, इंद्रियां हीन पड़ जाए, फिर भी मरना तो नहीं चाहता। वो कहता डॉक्टर के ले जाओ, दिखाओ, एक्सरे कराओ, समझे ना। रोटी पूरी नहीं खाई जाए तो नलकी लगाओ। मैं कई बार सोचता हूँ सब जीव जीना चाहते हैं, परंतु भाइयों ये भी सोचो, ये भी जीना चाहते हैं। ये फूल अगर पौधे पर होते हैं तो खिलते रहते हैं और तोड़ने के बाद धीरे धीरे हिलते रहते हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे भाई बहनों में आज के दिन इस प्रकार की करुणा हो कि मैं भी जीना चाहता हूं तो वो भी जीना चाहता है। मैं किसी के जीवन में बाधक न बनूं, बाधक साधक बनूं, मेरा जन्म सफल हो जाए। मैं कई बार मन में सोचता हूं आज के लोग अपना सुख चाहते हैं, औरों का दुख भले हो। अरे ये मत करो, ये भी देखो, ये भी जीना चाहता है, इसको भी जीने का अधिकार है। हम सब मिल के चलेंगे तब हमारा परिवार है, सब मिल कर चले। महावीर ने इसीलिए कहा मिट्टी में सभ्य भूएसु, सब प्राणियों के साथ मैत्री हो। मुझे गौरव होता है, मुझे खुशी होती है कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे और दोनों ने भाइयों इस प्रकार से साधना का एक स्रोत बहाया
कि बुद्ध ने करुणा का स्रोत बहाया कि लोगों में करुणा हो। अगर करुणा का भाव जग जाएगा तो गुस्सा 9 2 11 हो जाएगा। पर आज करुणा की जगह क्रूरता बढ़ रही है। जब आदमी होता ना क्रूर तो मिलने वाला हो जाता उससे दूर, ध्यान रखना, नहीं तो शांति रहती है भरपूर। मैं कई बार सोचता हूं आज के लोग वो करुणाशील बन जाए तो शायद कई प्रकार की समस्या का समाधान हो जाए। जो व्यक्ति करुणाशील होता है उसकी वाणी में कैसा रस होता है, कैसा रस होता है, मृदु रस होता है। और वह क्रूर होता है, आप देखो उसकी आकृति बदल जाती है। जब व्यक्ति क्रूर बनता है चेहरे का रंग बदल जाता है, आंखों का कलर बदल जाता है। आंखें कैसे हो जाती है, लाल, मुंह से निकलती है गाल, हमला होता है तत्काल। देखने वाला कहता है दोनों को थाने में डाल, दोनों की पुलिस खोल देती है खाल। मैं कई बार सोचता हूं हमें करुणाशील बनना है ताकि हमारे स्नेह बरसे। आप देखो करुणा और अहिंसा के द्वारा बिना मेकअप किए चेहरे पर ताजगी आ जाएगी। हम लोग जैन संत हैं, हम लोग क्रीम पाउडर तेल लगाते नहीं है। और लगाने वालों को कहता हूं मैं कि ज्यादा क्रीम पाउडर तेल लगाओगे तेल ये दिन भर डस्ट उठती है, ये सारी चिपक जाएगी, ध्यान रखना। और फिर दिन भर साबुन ठेल, ओहो रगड़ते। हम लोग तो साबुन लगाते नहीं है चेहरे पर, बिल्कुल नहीं, सर्फ लगाते नहीं है, बस थोड़ा सा पानी से धो ले। क्यों कि क्रीम पाउडर लगाते नहीं है। आप पहले आप क्रीम पाउडर तेल लगाते हो, तेल फिर जमता है मेल, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं आप लोग वो करुणा का स्रोत बहाएं, वो अहिंसा का स्रोत बहाएं, जिससे आपके दिल दिमाग में शांति का वातावरण हो। जिसके दिल दिमाग में शांति होती है उसकी वाणी में क्या होता है, मिठास। दुनिया आ जाती है उसके पास, सब बन जाते हैं उसके खास, बन जाते हैं चरणों के दास। बहु ओचे सास करके देख लेना प्रयास, घर में उल्लास ही उल्लास, नहीं तो घर का सत्या ना। मैं चाहता हूं आप लोग इस प्रकार से भाव बनाओ। केवल हम तन की शुद्धि कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं तन को मैला रखो, पर तन से भी ज्यादा भाइयों मन को अच्छा रखो। मन चंगा तो कठौती में, नहीं तो गंगा पे जाके लोग करते हैं दंगा। दुनिया कहती है कोई आ गया लफंगा, कपड़े पहने फिर उसको कहते हैं नंगा। मैं चाहता हूं आप मन को अच्छा बनाएं, आपका मन अच्छा होगा, मुझे विश्वास है आपका तन भी अच्छा होगा। और मन खराब हो गया ऐसे बैठ जाओगे ना, तन और खराब हो जाएगा। मैंने 2 पंक्तियों में लिख दिया, कांटों में रहकर भी फूल सुखी है, कांटों में रहकर भी फूल सुखी है, और बंगले में रहकर भी इंसान है दुखी। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति अपने जीवन को साधनामय बनाए, संयममय बनाए, शांतिमय बनाए, अहिंसामय बनाए, और इस मनुष्य जन्म का कुछ लाभ उठाए। ऐसे आए जैसे न जाए, कुछ करके दिखाए। मुझे बहुत गौरव होता है आज इस कार्यक्रम में कितने संप्रदायों से लोग पहुंचे। धर्म के नहीं कहूंगा, धर्म तो सब एक ही है, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, धर्म सबका एक है। कौन धर्म हिंसा सिखाता है, कौन धर्म झूठ बोलना सिखाता है, कौन धर्म चोरी करना सिखाता है? क्या कोई सिखाता हो तो मेरे को बाद में बता देना, अभी नहीं तो बाद में नोट करा के महाराज वो धर्म चोरी करना सिखाता है, वो धर्म झूठ बोलना सिखाता। सब कहते हैं सत्य के बराबर। तो संप्रदाय अलग अलग हैं, धर्म सबका। भाइयों मकान अलग अलग हैं, आसमान एक ही है, वो 2 नहीं है। हमारी चित्त वृत्ति ऐसी बने, हमारा चित्त शांत हो, सहज हो, सरल हो, निर्मल हो, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे से आगे गतिमान बनते जाएं। मुझे विश्वास है कि जैन धर्म में तो ये लिखा है आत्मा से क्या बनना है, परमात्मा। पर बौद्ध में भी यही कहा है, दूसरा नहीं कहा है। उन्होंने भी श्रमण संस्कृति को महत्व दिया है, श्रमण की संस्कृति, श्रम करो सब कुछ प्राप्त करो। मैं जानता हूं और मैं कहता हूं कि यहाँ पर आज जो एक सुंदर माहौल बना है, वो सुंदर माहौल, और हमारे केसी जैन साहब ने तो आज उदारता से कह दिया, ये हर समय तैयार है। इन्होंने का ऐसे कैसे कह दिया, क्या इनके बनाए हुआ है?
है? पर मुझे लगता है इनके मन को ये भा गया कि इस प्रकार से अगर हम मिल बैठ करके प्रेम से शांति की, सौहार्द की, साधना की, समन्वय की बात करें तो ये मकान है किसके लिए, यहीं छोड़ जाएंगे। ध्यान रखना, कोई लेके जाने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं इस प्रकार के आयोजनों से धर्म की गरिमा बढ़ती है, संप्रदाय की नहीं, धर्म की गरिमा। समझे? मैं चाहता हूं आज जो कार्यक्रम हो रहा है इससे धर्म की गरिमा बढ़ रही है। और वास्तव में संप्रदाय की जय आज तक नहीं सुनी है। क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, संप्रदाय की नहीं। तो मैं आज भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, भाइयों, बुद्ध की लुम्बिनी भी जाके आया हूं, भैरवा जाके आया हूं, वहां आश्रमों में जाके आया हूं। मैं तो सब जगह भ्रमण करता रहता हूं और अच्छी चीज मिलती रहती है उसको अपने दिल में ग्रहण करता रहता हूं। क्योंकि मेरे गुरु पूज्य गुरुदेव तुलसी, उन्होंने मुझे सिखाया साधु बनते कमल। देखो हम जैन हैं, पर ध्यान रखना जैन से पहले मैन है। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं इस मैन तत्व को लेके चला, कहीं पर भी समस्या नहीं हुई। कहीं पर भी जाते हैं हम इंसानियत की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं आप जैन बनो, हम कहते हैं आप गुड मैन बनो। अच्छा व्यक्ति अच्छे परिवार, अच्छे समाज, अच्छे देश और अच्छे राष्ट्र का, अच्छे विश्व का निर्माण कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं अच्छा नहीं बना वो दूसरों को अच्छा नहीं बना सकता। महावीर ने बार बार कहा बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोहिगाणं, खुद ज्ञानी बनो औरों को ज्ञानी बनाओ, खुद जागो औरों को जगाओ। मैं चाहता हूं लोगों में इस प्रकार की भावना का जागरण हो और हम अपने जीवन में हर पल इतनी सजगता रखें कि मेरे से कोई भला न हो तो किसी का बुरा नहीं, मेरे से किसी का कल्याण नहीं हो तो नुकसान नहीं, मेरे से किसी का सत्कार नहीं हो तो किसी का बहिष्कार नहीं। अगर ऐसी रहेगी भावना तो आपका जीवन रहेगा सुहावना, सबको लगेगा मन भावना, नहीं तो लगेगा डरावना। मैं चाहता हूं आप इस प्रकार की जीवन शैली को बनाएं और आज के इस महाकरुणा दिवस, करुणा नहीं महाकरुणा, इसको सफल बनाने का प्रयास ये कि हम जितने बैठे हैं उनके दिल में तो करुणा के भाव हो, उनके दिल में अहिंसा के भाव हो। मैत्री, जैन धर्म में जो 16 भावना है उसमें कारुण्य भावना है, मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थ। मुझे गर्व होता है, मुझे खुशी होती है कि महावीर और बुद्ध का उपदेश तो समान ही है और दोनों ही एक वास्तव में इंसान रूप में एक भगवान है। मैं उनको भगवान तुल्य मानता हूं कि आप लोग भी उनके उस उपदेशों के द्वारा, उस प्रवचनों के द्वारा आपके जीवन को भी अपना अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कदम कदम पर विकास करेंगे, सदा शांति का एहसास करेंगे, नित्य कीमती जीवन का सत्यानाश करेंगे। ये कीमती जीवन है, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। वो दिन धन्य हो जिस दिन क्या मिले, मनुष्य जन्म, ताकि मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आज जो ये समागम हुआ है यह एक अपने आप में प्रेरणा है, सबके लिए प्रेरणा है। कितनी शांति है बुद्ध के इस वास्तव में जीवन से शांति, महावीर के जीवन से शांति, महापुरुषों ने एक ही दर्शन दिया, शांति। भगवान महावीर ने कहा जय बुद्धा ऐकंता, जय बुद्धा अनागया, संति ते सिंह पैठाणं भूयाणं 𝐤𝐸𝐧𝐿। जितने भी बुद्ध और तीर्थंकर हुए हैं और जितने होंगे उनका आधार क्या है, शांति। चित्त में शांति हो ना तो भोजन भी अच्छा लगता है, भजन भी अच्छा। चित्त में शांति नहीं हो तो न तो भाइयों भोजन अच्छा लगता है न भजन अच्छा लगता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, शांति। इसको सारी दुनिया मानती पर ये कैसे हो ये नहीं जानती, के लिए अपनी अपनी बातें तानती, इसलिए घर घर हो गई आज अशांति। हम लोग कहते हैं तानना बंद करो और मानना प्रारंभ करो। बाप की बेटा मान ले, सासू की बहू मान ले और भाई की भाई मान ले तो कभी घर में झगड़ा होगा क्या? कभी नहीं होगा।
उस घर में प्यार होगा, हर सपना साकार होगा, नहीं तो जिंदगी में जीवन बेकार होगा और धरती पर भार होगा। मैं चाहता हूं आपका जीवन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक प्रेरणा बने। भाइयों, वो तो अपना जीवन बना गए, बुद्ध और महावीर, हमको तो बनाना है, अपना जीवन बनाना है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी आज श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, मेरा आज यहाँ का दिल्ली का ये इस प्रवास का अंतिम दिन है। इस ऑडिटोरियम में मैंने कई कार्यक्रम किए। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की कृपा से, पर ऐसा कार्यक्रम तो 𝐻𝐸𝐧𝐚 आज ही हुआ है जिसमें इतने मतावलंबी, इतने सांप्रदाय मुझे देखने को मिले। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से एक कार्यक्रम होने से हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ेगी, जो एक दूसरे में जो थोड़ी सी दूरियां हैं वो दूर हो जाएगी। जब हम पास बैठेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे विश्वास है कि उसको कुछ चुनेंगे भी। सुनेंगे नहीं तो चुनेंगे क्या? पहले सुनेंगे, फिर अच्छी चीज को चुनेंगे, फिर अपने जीवन में बुनेंगे। हाँ, ये चीज बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहता हूं आज केवल मैं इतना सा आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को करुणामय बनाएं, ताकि ये अपने आप विकार दूर हो जाए, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दूर हो जाए। ये जो आज घर घर में गुस्सा बढ़ गया है, घर घर में गुस्सा बढ़ गया है, क्या इतने लोग बैठे हैं, कोई मुझे गौरव के साथ बता सकते हैं कि महाराज मेरे घर में कोई गुस्सा नहीं करता है क्या कोई? मैं कोई घर क्या एक एक व्यक्ति को पूछ लो, पर आज तो अगर वो भाइयों करुणा दिवस मनाया तो करुणामय बन जाओ, गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। आपका जीवन अहिंसामय बन जाएगा। आपको भाइयों उग्रता आएगी नहीं, चाह करके भी गाल नहीं निकलेगी, मुंह से गाल निकल नहीं सकती। तो मैं चाहता हूं आप अपने जीवन को इतना स्वस्थ, मस्त, विश्वस्त, प्रशस्त बनाएं ताकि अस्त व्यस्त से स्वस्थ बन जाएं। स्वस्थे चित्ते बुद्धया प्रस्फुर्यन्त, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक सूत्र दिया था। स्वस्थ चित्त में बुद्धि का स्मरण होता है। निर्मल पानी में नीचे क्या है नजर आ जाता है। पानी निर्मल होता है तो नजर आ जाता है इसमें राख है, इसमें चूना, नहीं तो दिमाग रहता है सूना, चाहे बंबई जाओ चाहे पूना, समझ दिमाग सूना। और वही पानी गुदला होता है, नीचे पता नहीं पड़ता लोटा है सोटा है। उसी प्रकार आप ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को निर्मल बनाइए, पवित्र बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। शीशे की तरह आपका जीवन आपको दिखने लग जाएगा। जैसे आज के लोग दर्पण में दिन भर देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, नहीं तो बाहर निकले कैसे, फिर कह देते मेरे जैसे। क्यों खराब करते हो समय और पैसे? बढ़िया रखो अपने अरमान, मिलने वाले करेंगे आपका सम्मान। पूछेंगे कहाँ से आए हैं श्रीमान, ले जाएंगे अपने दुकान या मकान, खिलाएंगे मधुर मधुर पकवान, नहीं तो घर वाले पकड़ के निकालेंगे कान, कतन खत्म कर दी मेरी शान, फिर रोते रोते निकलेंगे प्राण, पहुंचा देंगे शमशान। तो हम केवल उस दर्पण से चेहरे को न सुधारें, अपने आत्मा से सुधारें। अपने आप को निहारते रहो, अपनी कमियों को सुधारते रहो। जो अपनी कमियों को सुधार लेता है भाइयों, वो निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है और माला माल हो जाता है। और मैं आशा करता हूं आज का दिन ये इस प्रकार का एक गौरवशाली दिन है कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए विशेष तौर से ये जो बना है ऑडिटोरियम, इसका नाम क्या है जानते हैं? भिक्षु ऑडिटोरियम। मैंने कहा ये सफल हो गया। इसमें भिक्षु भिक्षु बौद्ध भिक्षु कितने बैठे हैं, तो भिक्षु ऑडिटोरियम वास्तव में भिक्षु ऑडिटोरियम जैसा कहनी, एज योर नेम एज योर वर्क, जैसा तुम्हारा नाम वैसा तुम्हारा काम। तो ये वास्तव में भिक्षु ऑडिटोरियम, आज इसमें कई कार्यक्रम होते रहते हैं, पर आज ये जैन और बौद्ध दोनों भिक्षु कहलाते हैं, साधु। हमारे प्रथम आचार्य का नाम भिक्षु स्वामी था, इसलिए उनके नाम से ये किया गया है भिक्षु ऑडिटोरियम। हमारे पहले भिक्षु स्वामी, दूसरे भारीमाल जी, तीसरे रायचंद जी, चौथे जीतमल जी, पांचवें मगराज जी, छठे माणकलाल जी, सातवें डालचंद जी, आठवें कालूराम जी और नौवें वे गुरुदेव तुलसी, जो यहाँ पर चतुर्मास करके गए हैं। इसी में
भाइयों इस अध्यात्म साधना केंद्र में। उसके बाद 10वें करके आचार्य महाप्रज्ञ जी, उसके बाद 11वें करके महाश्रवण जी। मुझे गौरव है ये साधना स्थल, इससे सबको मिलता है बल और समस्या का हल, सारे काम सफल, मेरा बिना मुनि कमल। समझे? अब बिहार कर जाएंगे कल, हम तो कल बिहार करना है हमें। और मैं चाहता हूं आप लोगों को इस प्रकार से एक टॉनिक मिले। मुझे तो कहा था कि 2-2.5 मिनट बोलना है, पर मैंने देखा कोई आया नहीं इशारा करने, न ऊपर से इशारा किया बोले कोई, तो मैं इसलिए कुछ अधिक बोल गया हूं। और मैं चाहता हूं कि आपने मेरी बात को जो शांति सुना है, यह भी एक धर्म का परिचय दिया है, यह भी एक धर्म का। नहीं तो आज के लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपनी बात सुना जाते हैं और बाद में चले जाते हैं, बस फोटो खिंचा जाते हैं। पर मुझे लगा कि आज वास्तव में आप लोगों ने जो भगवान बुद्ध की करुणा और भगवान महावीर की अहिंसा, जो उनका तुलनात्मक चिंतन आपने सुनने का प्रयास किया, तो ये आपका प्रयास हर तरह से आपके जीवन में बिखेरे, आपकी सुवास आपके जीवन में अधिक से अधिक बड़े मिठास कि हाँ वास्तव में हमें बुद्ध की करुणा सुना है, करुणाशील बन जाओ, ताकि आपका तन भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, आपका चिंतन भी अच्छा रहेगा, आपका भाइयों परिवार भी अच्छा रहेगा और आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा, जहाँ जाओगे सत्कार भी अच्छा रहेगा। जो क्रूर बन जाता है न वो अपने परिवार को संभाल सकता, न अपने व्यापार को संभाल सकता। हमें करुणा की आवश्यकता है, अहिंसा की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ आज ये कार्यक्रम किया है, मैंने थोड़ी सी प्रेरणा दी है, मेरी प्रेरणा अच्छी लगे तो कम से कम अनर्थ हिंसा से बचने का प्रयास करें। अर्थ हिंसा करनी पड़ती है, अनर्थ हिंसा से बचा जा सकता है। अर्थ हिंसा का मतलब भाइयों, हिंसा के बिना तो भोजन बनता नहीं है, चाहे वो पृथ्वी काय की हो, वनस्पति काय की हो, अप काय की हो, तेजस काय की हो, पर कम से कम अनर्थ मत करो। 2 फुलके की भूख है, 3 को लेकर के जूठा मत गिराओ, ताकि कमाने वाले को दिक्कत नहीं, सामान जुटाने वाले को दिक्कत नहीं, भोजन पकाने वाले को दिक्कत नहीं, प्लेट उठाने वाले को दिक्कत नहीं, उसको गिराने वाले को दिक्कत नहीं। आपका जीवन ऐसा बने, यह महावीर का दर्शन है कि तुम्हारा जीवन अहिंसामय हो, संयममय हो। आज झूठी रोटी खाने को कोई तैयार नहीं है, क्या कोई तैयार? सब गिराई जाती है, ये अनर्थ हिंसा होती है। झूठे पानी को पीने कोई तैयार नहीं है, ये सब गिराया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके अपने जीवन में संयम को स्थान दें। संयम जीवन में साधना का एक सुंदर रास्ता है, संयम के द्वारा ही साधना की परिपुष्टि होती है। जो संयम नहीं रखता वो जीवन में साधना नहीं कर पाता। संयम बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने 3 बिंदु दिए, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सया। जो व्यक्ति अहिंसा संयम तप में रमण करता है, रमन उसका जीवन बन जाता है चमन, समझे? और भाइयों उसके मिट जाते हैं आवागमन, लोग करते हैं उसको नमन। मैं चाहता हूं आप अहिंसा संयम तप से परिपूर्ण बने और एक एक व्यक्ति शक्तिवान हो, भक्तिवान हो, उसके हर सपने साकार हो, ये मेरा उनको आशीर्वाद है। और वो सपने कभी हिंसा से साकार नहीं होंगे, वो सपने अहिंसा से होंगे। वो सपने असंयम से कभी नहीं होंगे, वो सपने संयम से होंगे। वो सपने भोग से कभी साकार होने वाले नहीं है, त्याग से होंगे। मैं आज के दिन उस भगवान राम को भी याद करता हूँ। राम जन्मभूमि का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप देखो राम का नाम इसका इतना क्यों हुआ कि राम ने भी त्याग किया। किसका? राज तिलक का, समझे ना? शाम को तो दशरथ जी ने बुलाया था, किसके लिए? राज तिलक के लिए। और सुबह किस लिए बुलाया? वनवास। तब भी नहीं कहा पापा मत करो बकवास, ध्यान रखना, ये बना दिया इतिहास। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के दिल में भी ये हो कि हम इस भारत भूमि पर राम भी हुए, बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए और नानक भी हुए, समझे ना? इस राम भूमि पर, इस भारत की भूमि पर कितने कितने
संत महंत सूर तुलसी कबीर कितने कितने हुए जिन्होंने लोगों को एक जीने की कला सिखाई। उसमें भगवान बुद्ध और राम महावीर भी हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी महापुरुषों की वाणियों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम आनंद। Thank you, Muniji, for your inspiring words. Hello? 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 Is it audible? वॉल्यूम कम कर रखा, वहाँ से बोलना पड़ेगा। Venerable Bhikkhu Sanghasena was born. Hello. No, it's okay. Thank you, Muniji, for your inspiring words. Venerable Bhikkhu Sanghasena was born on 7 January 1958 in 𝐷, a remote village in Ladakh region, and later trained himself in Theravada Buddhist tradition under the late renowned Indian Buddhist master Venerable Acharya Buddha Rakkhita. Following his teacher's footsteps, Venerable Bhikkhu Sanghasena took on the leadership role in establishing Mahabodhi International Meditation Center in Leh, Ladakh. In order to put compassion in action, major activities are carried out by MIMC, which are as follows: Mahabodhi Meditation Program, Mahabodhi 𝐸𝐴𝐺𝐻 Monastery, Mahabodhi Milarepa Meditation and Trekking Camps, Mahabodhi Educational Programs, Mahabodhi Residential Schools and Mahabodhi Boys and Girls Hostels, Mahabodhi 𝐴𝐚𝐺𝐻𝐵 Branch School, Mahabodhi Bodh Kharbu Branch School, Mahabodhi School and Hostel Project for Blind and Visually Impaired Children, Mahabodhi Nubra Branch, which is to be started soon, Mahabodhi Karuna Charitable Hospital, Mahabodhi Mobile Health Clinic, Mahabodhi Maitri Charity Program, Mahabodhi Home for Aged and Destitute, Mahabodhi Nunnery, Mahabodhi Adult Women Literacy Project, Mahabodhi Environmental Projects, Mahabodhi Interfaith Program, Mahabodhi Youth Wing, Mahabodhi Right Livelihood Enterprise, and Mahabodhi Eco Resort Camp, a step towards self-reliance and self-sufficiency. And lastly, Mahabodhi Padmalok Girls Hostel, Bangalore. I would now like to invite Venerable Bhikkhu Sanghasena, Founder President, MIMC, Leh, for delivering his welcome address. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sangham Saranam Gacchami. May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages, may all the divine beings and divine powers from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful Bhikshu auditorium and beautiful city of Delhi. Our most revered Param Puja Shri Muni Kamal Kumarji Maharaj and all the other spiritual luminaries, excellencies from different embassies, and all the Sangha members, and all distinguished guests present here. I shall be very grateful if you can forgive me for not being able to mention the name of each
distinguished persons, spiritual masters and other distinguished guests present here. If I try to take the numbers over 30, it will take a long time, and time is always a constant. And Mahabodhi has always a blame for organizing a long program, but I am not sure whether I will be excused today for not having a long programs. So please, please, please forgive me. We are very, very fortunate to have the blessings and gracious presence of so many distinguished personalities. And first of all, I want to express my profound gratitude to Param Pujya Shri Muni Kamal Kumar Ji Maharaj for his gracious presence, not only his gracious presence, but the beautiful, heart-touching, heart-transforming, motivational Dhamma Deshana just he delivers. So after listening to him, I don't like to take much time. I think the spiritual food you already have got enough, but I will do these formalities to welcoming you. As you have already heard from our previous speakers, that the Mahabodhi International Meditation Center and the Mahakaruna Foundation, Delhi, have initiated yet another campaign or movement, that's Mahakaruna, the Great Compassion in Action programs, several years back. And we have been organizing these programs in different parts of India and abroad to create awareness, the importance of compassion in our life, in the individual life, in the family, in the society, in the nations, and finally in the whole world. We have so many programs, so many developmental activities are going on. So many conference, seminar, workshops, and this and that, how to improve the quality of Coca-Cola and Pepsi-Cola, how to improve our automobile, cars, aeroplanes, and all these electronic gadgets and all these things. You already have a fantastic smartphone, 3G, 4G, 5G. They are not satisfied with 4, 5G. They are now trying to have 6G, 7G, but no Guruji. So all these Gs will be useless without Gurujis. So Mahakaruna is an effort along with all forms of developmental activities, material, economical, physical, science and technology. We should also develop equally even more the compassion, universal compassion, not Buddhist compassion, not Indian compassion, not Eastern compassion, universal compassion, inclusive compassion, unconditional compassion. Why we have started this new initiative, a campaign of spreading compassion in action? It is a result of the research for last 30, 40 years. Last more than 34 years, we have been doing kind of research, contemplating, discussing that importance of compassion. More and more we think on this subject, more and more it becomes clear that the universal compassion, Mahakaruna, is one of the biggest answers to numerous questions, one of the biggest antidote to the ills of the 21st centuries. So we believe, not believe, it is very clear from understanding, from experience, if every human beings develop even little bit of pure compassion, unconditional compassion, then the world will be different. If we have the compassion, such a kind of cruel, inhuman, brutal killing war cannot happen in this world. Such a violence against the Mother Earth, against the environment, against the animals, against among human beings, against each other cannot happen. Whatever happening today, you say it, climate change, global warming, or environmental degradations, war, violence, is a direct result of the lack of compassion,
declining the quality of compassion in human hearts. People think that these weapons, the more powerful weapons of destructions or military or guns and bombs, police and other things can bring peace and security. With this, every country, everybody is trying to increase the budget for defense, budget for police, budget for weapons of mass destruction. But the insecurity is increasing more and more. Insecurity or safety, there is no safety. Therefore, I think if we can somehow create awareness among the people, masses, to develop a compassion, universal compassion, I think this that seems to be the only solution. Without taking much time, we have so many great spiritual masters, peace activists, promoter of compassions, so many distinguishers there. They will share their wisdom, so I will not take much time. Just I want to give a few examples of the effect of compassions. I always say, and have seen it, with compassion, a doctor can become a medicine Buddha. With compassion, a hospital can become a temple of God. Without compassion, a doctor can become a dangerous. Without compassion, a hospital may become an organ trade center. This is the effect of compassions, right? Another example, there used to be lady doctors in Dharamsala, doctors in Tibetan tradition. There are so many doctors. The system is same. The medicine are same. But it is found that all those patients who go to these lady doctors somehow get cured much faster than the other doctors. So she became so famous, patients started coming from all parts of India and abroad. And finally, some people try to make a research. Why? Why all these patients who go to these lady doctors get cured, get diagnosed or get cured so fast, and why not from the other doctors? The same medicine, same system. Then later on they found that this doctor was so compassionate, especially in our traditional system of medicine, Tibet or Ladakh. So much prayer is involved, so much prayer of compassion involved. Preparing the medicine, collecting the herbs, or giving the medicine. Even before checking the patient, there is a prayer. All the time, prayer of compassion, prayer of compassion. So it is found that those patients who were going to this lady doctor, 50% is cured from the medicine, 50% cured from the medicine, the power of compassion. So I think this is in all the fields, in every field, if compassion is there, much, much less problems. With this, we have initiated this campaign, and I'm so glad today that more and more people are joining. Today, as Muniji mentioned here, so many people from all different religion, different societies are joining this compassionate movement, because the compassion need is for all, beyond the boundaries of religion, beyond the boundaries of nationalities. This compassion is universal, this compassion is inclusive, this compassion is unconditional. Yeah? So I'm so happy to share with this that we have already visited and signed MOU with several Buddhist, several universities and educational institutions. They are all willing to, start a new course on compassion in action. As you have heard, compassion, Karuna, Mitri, Ahimsa, Daya, all these are no new words for us. But all these things will have no meaning until we put into action. Our call, our movement is to ask for the compassion in action. So I'm so happy to announce that today also a beautiful book, Compassion in Action,
after a long time, have now come out. I must thank Dr. Trivedi Sahib for his hard work, for his kind work, for his compassion work in bringing out this beautiful book. And this book will be revised further, will be polished further, and eventually this book will become a textbook for all many educational institutions and universities within India and beyond. Thank you. And without taking much time, I want to express my gratitude again to His Holiness 𝐻𝐸𝐴 Khensur Rinpoche. Very long name, sir. If you permit me, I will like to just address you Rinpoche ji. Rinpoche is newly new General Secretary of the International Buddhist Confederations, very dynamic, very visionary, and we are very fortunate to have his present here, his blessings. And with Venerable, we have our Dr. Kiran Bedi, who doesn't need any introduction, but I want to give another introduction. You might not have heard that she is known as Dr. Kiran Bedi, and she was the first, not only first Indian woman IPS, but she was the first police officer to introduce Vipassana meditation in the biggest jail of India or the world, maybe biggest in the world. Her jail is one of the biggest jail in the world, where she introduced Vipassana and brought so much transformation, so much reform. Before Madam introduced this program, Vipassana meditation in Tihar jail, the system used to be just punish. They never think they bring criminal in the jail, keep on feeding something and beating. There is no idea of reformations. That crime is committed by human beings, mistakes are committed by human beings. They can improve that. They can get better. There are so many examples, like the Angulimala and so many. They committed crime, but then later on they realized they practiced Dharma and got enlightenment, They never thought. It was Madam who have first time introduced Vipassana meditation in Tihar jail and transformed all these patients. So doctor's name is now Dr. Kiran Bedi is Dr. Karuna Bedi. Karuna. That's why we cannot have any Karuna program without her present. Thank you so much, Doctor, for being with us and encouraging us. And Imam Sahib, from the beginning, for last many years, we have been associated, and such a great inspiration, motivation for me personally, Imam Sahib, to work together for the interfaith harmony, for religious harmony, world peace. We have so many distinguished. His Excellency, the Ambassador of Myanmar is there. His Excellency, the Ambassador of Bhutan. And both countries we are working hard. It's beautiful country, both. And we have His Excellency, Ambassador from Myanmar, and Swami Goswami Sushilji Maharaj, I think the founder president of the All India Religious Interfaith Harmony Organization, with whom I have been associated in working together to promote religious harmony interfaith program. Thank you so much, Swamiji. And then there are so many other Swamis, Imam Sahib and Chandok Sahib. Oh, so many here. Please forgive me for not being able to mention. So many wonderful people are here to join together to promote compassion for world peace within our life, for our society, our country, and the whole world. And without taking much time further, I must thanks again to our 𝐻𝐸𝐧𝐚 for providing this beautiful Bhikshu auditorium for these Mahakaruna programs. As you have heard, Buddhism and Jainism share similar teachings. The very core of both the religion is Ahimsa and Karuna. You already have heard. They are contemporary. And His Holiness Dalai Lama used to mention often Lord Buddha and Lord Mahavira is like twin brothers, twin enlightened brothers. So we had conference, Buddhism in Hinduism, Buddhism in Christianity, Buddhism in Islam, so many workshops, seminar, conference, but we didn't have conference or seminars, a program joined together.
with Jainism. And we have been discussing this for last many years, and today we started here together. So I think all religion must come together, work together to now promote the ancient wisdom of India, not only for our young generation, but for the whole world. The whole world is going through unthinkable challenges, unprecedented challenges, war, violence. I think the only solution we find is not more powerful bombs and guns in economy, technology, Coca-Cola and Pepsi-Cola, but the ancient wisdom of ahimsa, karuna, mitri, dhyana, meditation are the solution for this. So for this, we all have to now come together, work together to spread the ancient wisdom of India all over the world. That means we, the leaders, the spiritual leaders, with other political leaders together, have to think and work together to prepare thousands or lakhs of young generation, young people, prepare as a messenger of peace, prepare as an ambassador of compassion, prepare as bodhisattva to carry this message in ancient wisdom of India to every nook and corner of the world. And the whole world is really looking at India for the spiritual leadership, because all other kinds of leadership fail to bring peace in the world. They succeeded to bringing very tasty Coca-Cola and Pepsi-Cola. They succeeded bringing more powerful bombs and guns and other things, but they have failed in bringing peace and harmony. For that, there is no other way, no solution except the ancient wisdom of India. So we pray and hope that we together will join together. This is not just one day coming together and discussing and then going away. This will continue together. We thank you all for your support, for encouragement to carry forward the light of Mahakaruna in every corner of the world. With this, once again, I express my profound gratitude to all of you for coming, sparing your precious time from your busy schedule to come over here and to join this Mahakaruna Diwas Compassion in Action programs. Once again, thank you so much. Thank you. We shall now honor our distinguished dignitaries and guests. We shall begin with our distinguished dignitaries first, and I would like to invite them on stage. First, we have with us Shri 𝐸𝐶 Director, Adhyatma Sadhana Kendra. Shri 𝐸𝐶 Director, Adhyatma Sadhana Kendra. His Holiness Shatse Khensur Jangchup Choeden Rinpoche, General Secretary, IBC. Dr. Sandeep Marwa, Founder, Asian Academy of Film and Television. Shri Navratan Agarwal, Director, Bikanerwala. Dr. Kiran Bedi, IPS, former Lieutenant Governor, Puducherry. His Excellency Mr. Moy Kwang Ang, Ambassador, Republic, Union of Myanmar. His Excellency Major General Westop Namgyel, Ambassador of Bhutan to India. Mr. Phanuwit Vetsamphan, Second Secretary, Thailand Embassy in Delhi. Ms. Rima Robe, Deputy Commissioner, Mauritius. Dr. Imam Umair Ahmad Ilaisi, Chief Imam, All India Imam Association. Shri Goswami Sushil Maharaj, National President and Convener of Bharatiya Sarva Dharm Sangsad. Shri Swami Chandar Dev Maharaj, Rashtriya Sanyojak Global Sant Samaj, Mumbai. Dr. Bini Sareen Brahmakumari, Regional Director, Global Peace Initiative for India. Srimati Rinchen Lamo, Honorable Member, National Commission for Minorities, Government of India. Swami Sarvalokanand Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, New Delhi.
Padma Shri Dr. Karthikeyan, IPS, Retired Director, CBI. Shri Paramjit Singh Chandok, Chief Advisor to Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. Respected Maulana Kautab Mujtaba Sahib, Rashtriya Adhyaksh Ulama Foundation. Ambassador Dr. Deepak Vohra, Special Advisor in Africa. Dr. Priya Ranjan Trivedi, President International Association of Educators for World Peace. Dr. Satnam Singh Sindhu, Founder Chairman, India Minorities Foundation, Chancellor, Chandigarh University. Sister Ganga Nandini, Director of Projects, GIWA. Dr. A.K. Merchant, General Secretary of the Temple of Understanding India Foundation. Father Bento Rodrigues, Director of Father Hennel School, Greater Noida. Dr. Anthony Raju, Global Chairman, IHRAC, and Dr. Hirohito, Advisor, Swami Vivekanand Subhati University. हम अपना जो अवार्ड ऑनर सेरेमनी शुरू करते हैं और सबसे प्रथम हम लोग मुनि जी को हम नहीं दे सकते क्योंकि जो जैन मुनि हैं वो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हैं, बट हमें उनका आशीर्वाद है, उनको जाना भी है, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका आशीर्वाद बना रहे। और हम शुरू करते हैं तो मतलब एक एक करके आप बोलती है। श्री के.सी. जैन, डायरेक्टर अध्यात्म साधना केंद्र। तो के.सी. जैन साहब आध्यात्म साधना केंद्र की तरफ से हम गुरु जी उनको ऑनर करना चाहेंगे, तो के.सी. जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसकी बात जल्दी जल्दी बस ठीक है। His Holiness Shatsek Hensu Jangchuk Choyden Rinpoche, General Secretary, IBC. His Holiness Shatsek Hensu Jangchuk Choyden Rinpoche, Secretary General, IBC. मैं मार्कंडे राय साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं, उनका भी हम लोग ऑनर करना चाहेंगे। Dr. Sandeep Marwa, Founder, Asian Academy of Film and Television. Shri Navratan Agarwal, Director, Bikanerwala. Dr. Kiran Bedi, IPS, former Lieutenant Governor, Puducherry. His Excellency Mr. Moi Kwang Ang, Ambassador, Republic of Union of Myanmar. His Excellency Mr. Moi Kwang Ang, Ambassador, Republic of Union of Myanmar. His Excellency Mr. Moi Kwang Ang, Ambassador, Republic of Union of Myanmar. His Excellency Major General Westop Namgyel, Ambassador of Bhutan to India. Mr. Phanuvit Vedsamphan, Second Secretary, Thailand Embassy in Delhi. Mr. Phanuvit Vedsamphan, Second Secretary, Thailand Embassy in Delhi. Ms. Reena Robe, Deputy Commissioner, Mauritius. Dr. Imam Umair Ahmad Ilaisi, Chief Imam, All India Imam Association. Shri Goswami Sushil Maharaj, National President and Convener of Bharatiya Sarva Dharm Sangsad. Shri Swami Chandar Dev Maharaj, Rashtriya Sanyojak Global Sant Samaj, Mumbai.
Dr. Bini Sareen Brahmakumari, Regional Director, Global Peace Initiative for India, Srimati Rinchen Lamo, Srimati Rinchen Lamo, Honorable Member, National Commission for Minorities, Government of India. Srimati Rinchen Lamo, Honorable Member, National Commission for Minorities, Government of India. Swami Sarvalokananda Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, New Delhi. Padma Shri Dr. Kartikeyan, IPS, Director, CBI. Shri Paramjit Singh Chandok, Chief Advisor to Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. Respected Maulana Kautab Majtuba Sahib, Rashtriya Adhyaksh Ulama Foundation. Ambassador Dr. Respected Maulana Kautab Mujtaba Sahib, Rashtriya Adhyaksh Ulama Foundation. Ambassador Dr. Deepak Vohra, Dr. Priya Ranjan Trivedi, President, International Association of Educators for World Peace. Dr. Satnam Singh Sandhu, Founder Chairman, Indian Minorities Foundation, Chancellor. Sister Ganga Nandini, Director of Projects, GIWA. Dr. A.K. Merchant, General Secretary of the Temple of Understanding, India Foundation. Father Bento Rodrigues, Director of Father Egnell School, Greater Noida. Dr. Dr. Hirohito, Advisor, Swami Vivekanand, Shubh Bharti University. We'll request Dr. Markandeya Rai also to please come on the dais. Guruji would like to honor him also. मैं आचार्य सत्येंद्र नारायण जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डैश पर आएँ, गुरुजी उनको भी ऑनर करना चाहेंगे। आचार्य सत्येंद्र नारायण जी। Shri. Okay. We have with us Shri Swami Chandar Dev Maharaj. Father Bento Rodrigues, Director of Father Egnell School, Greater Noida. We are glad to announce the launching of a book on compassion, English, and vegetarianism, Hindi.
𝐷𝐷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 
Excuse me, attention please. Now we have a very important task, releasing the first very important book on compassion in actions. Now I will request all the distinguished guests on the dais to kindly release this book. There are two books. One is in Compassion in Action in English, written by Dr. Trivedi Sahib. Then there is another book on vegetarianism in Hindi by our Pyramid Society, spiritual society movement. So I will request Excuse me, please stay seated. The program is not yet over. The program is not yet over. Please be seated. Kidu kerla kim ke yang ne 𝐻𝐸𝐽𝐸 se Kidu kerla kim ke yang ne 𝐻𝐸𝐽𝐸 se Sangyas tong la las pe chamstar seve chen chamstar seve chen Mishes mun pelamna, odzir nashna spelzat, sultim nashni lamna. Maja 𝐚𝐤𝐴𝐺𝐻𝐸𝐧 Please take their seat. I would like to invite the guests, Mrs. Alekhya Shastri and Mrs. Amulya, MD PMC, Dr. Nancy Juneja, founder and CEO, RevUp Life Skills, RevUp Life Skills, DBPT Canada, Dr. Shiva Kumar Verma, Director, GETBC, Mr. Rohit Khurana, MD, Shanti Gyan Vidyapeeth School, Dr. Manish Jindal, Founding President, Mentor X, Srimati Anju Quatra, International Poetess, Humanitarian and Social Worker, Dr. P.P. Wangchuk, Editor-at-Large and Columnist, Ambassador Phunsukh Stobdang, former Indian Ambassador, Shri Anil Kumar Jain, Director Projects, MIMC New Delhi,
President of All Ladakh Students Union, New Delhi, please come up on stage. Jayashree Gupta, founder, Amaya Skin Essentials. M.K. Gupta, Managing Director, MKG Engineering. Funsuk Ladaki, renowned artist and singer. Major General Dr. Yash Moore. Everybody, please be seated. The program is not yet over. Ambassador Funsuk Stobdang, former Indian ambassador, please come on stage, sir. Dr. A.K. Merchant, General Secretary of the Temple of Understanding India Foundation. Dr. Anil Kumar Jain, Director Projects, MIMC, New Delhi. We have with us Funsuk Ladaki, renowned artist and singer. Now, I will be announcing the list of students for the Young Embodiment Award. First, we have Mr. Darsh Juneja, student of Shanti Gyan Vidyapeeth School. Please come on the stage. Mr. Avirat Jain, student of Shanti Gyan Vidyapeeth School. Ridzen Namgyal, University of Delhi. 𝐤𝐸𝐚𝐫𝐮𝐧𝐚 Cheskit, University of Delhi.
Faizan Ansari, India Vision Foundation. Khushi, Navjyoti India Foundation. Please give them a round of applause, please. Mr. Darsh Juneja, student of Shanti Gyan Vidyapith School. Mr. Darsh Juneja, student of Shanti Gyan Vidyapith School. Next we have Mr. Avirat Jain, student of Shanti Gyan Vidyapith School. 𝐷𝐻𝐚𝐵𝐻𝐻𝐻, University of Delhi. 𝐷𝐻𝐚𝐵𝐻𝐻𝐻, University of Delhi. 𝐤𝐴𝐚𝐻𝐿 Cheskit, University of Delhi. Faizan Ansari, India Vision Foundation. And Khushi, Navjyoti India Foundation. I would like to call Swami Sarvalokananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission, New Delhi, for his address. Sukh Ladaki. Punsogle. Ya sangma charuk ngira as mene man lik tang se mene khalo miyo sangma. Ngira lur demo tang se mene bor miyo nok sangma shore charuk. I think people have become little restless now. I have to invite Punsok Ladakhi, a renowned singer. He will present a beautiful melodious song on the Ahimsa and Karuna. Thank you. कैसा डॉक्टर किरण जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ अभी गुरु जी की वाणी से। एक दोहा सुनिए सब। हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, ये हमारे गुरु जी के हैं। हर हरकत की मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। तो हम सब यहाँ किसी कारण से मिले हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और कारण क्या है? कारण करुणा है। करुणा के नाम से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और मैं गाना गाऊंगा, धम्मा सॉन्ग। तो I want your attention. People who are moving around, I don't appreciate that. Hello? I don't appreciate people who are talking to themselves. I'm here to offer you something. I'm here to offer you something. फिर आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। हम लोग यहाँ बिना कारण नहीं मिले हैं, कारण से मिले हैं। वो कारण है करुणा, मैत्री। तो मैं संघसेना जी का भी तारीफ़ नहीं करूँ, कुछ फैक्ट बताऊँगा। संघसेना जी का ये है कि लद्दाख में हर शख्स को एम्पावर करते हैं। ये लंगड़े को दुड़ाते हैं, काने का आँख खोलता है। और मेरे जैसे आर्टिस्ट जो परिपूर्ण नहीं है, उनको इनकरेज करके हर जगह बुलाते हैं और इनकरेज करते हैं। तो संघसेना जी का पुण्य बहुत स्ट्रांग है हमारे लद्दाख में। एक लोकल लद्दाख की हैसियत से आई एम प्राउड ऑफ हिम दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड अ मंक लाइक हिम। इस बात पे ताली हो जाए। फैक्ट बोल रहा हूँ।
सुखन वो दिल नशी जो दिल से उठता है, कि दिल में वही बैठता है जो दिल से उठता है। दिल की बात आपको टच होना चाहिए। मैं गाने से पहले टेस्ट लेता हूँ कि सुनना आता है कि नहीं, नहीं तो मैं गाता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट बीइंग पेड। ना आप देखिए, मैं ले रहा हूँ टेस्ट साहब का। मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ। लद्दाख बंजर इलाका है, वहाँ हर चीज़ है, लेकिन वहाँ केले संतरे ऐसे फल नहीं होते। वहाँ खुबानी, अखरोट और सेब होता है। क्या होता है? खुबानी, अखरोट और सेब। 1965 में जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मेरे पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिया, बोला बेटा दिल्ली जाके केले संतरे खाना। मैं चेक कर रहा हूँ सुनना आता है कि नहीं, तभी गाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने 2 केला खाया, 1 संतरा खाया। मुझे संतरा केला भी ख़राब लगा, पिताजी भी ख़राब लगा। फिर पिताजी का, मेरे पिताजी बहुत मशहूर आदमी है, कहीं से उनका मैसेज आया, किसी मैसेज कि भाई केले संतरे खाओ, विटामिन सी से भरपूर है। फिर मैंने 2 केला खाया, फिर 1 संतरा खाया, फिर कसम खाया कि अपने पिताजी और केला संतरा तीनों को मैं टच नहीं करूँगा। एक दिन मैं कर्नाट प्लेस में घूम रहा था, तब का कर्नाट प्लेस अजीब सा था आपके न। मैंने वहाँ देखा पंजाबी 2 लड़का लड़कियाँ आपस में इश्क फरमा रहे हैं और केले और संतरे खा रहे हैं। मैंने कहा इन पंजाबी को केला और संतरा क्यों पसंद आया? मैं करीब जाके देखा तो वो छील के खा रहे थे। हाँ हाँ, ट्यूबलाइट है, कुछ लोग समझ में नहीं आया। मैं केले छिलके के साथ खाता था। हाँ 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 हाँ। अच्छा देखिए, मैं इनलाइटेंड नहीं हूँ, मेरे में बहुत ईगो है। संघसेना जी ने बोला भाई तुमने गाना है, तो बिल्कुल दिमाग में अटक गया, मुझे ऐसा चांस मिलेगा, ऐसे वातावरण मिलेगा, तो मैं बहुत उत्सुक हुआ। कल रात को जब मैंने ये देखा लिस्ट, सारे फ़ोटो दिग्गज लोग हैं, मेरा भी उसमें फ़ोटो था, तो मेरे ईगो को और अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, मैं जाऊंगा और गाऊंगा। लेकिन जब किरण बेदी जी का फ़ोटो देखा तो मैं बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि मैं उनके स्तर का आदमी नहीं हूँ। मैंने किरण बेदी जी का नाम 𝐸𝐴𝐻 गोयनका जी की ज़ुबानी कई बार सुना, बेटी किरण बेदी। इन्होंने तिहाड़ जेल में इंट्रोड्यूस करके, विपश्यना इंट्रोड्यूस करके बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अंतर्मन के गहराई में जाने का विधि दिया और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो आज इसी बहाने भिक्खु संघसेना जी की कृपा से मैं किरण बेदी जी आपके सामने रूबरू हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। यू आर माई धम्मा सिस्टर। तो धर्म का विजय हो। तो मैं 2-3 गाना गाऊंगा, लेकिन डिमांड पे, ऐसे नहीं। किरण बेदी जी को तो खासकर मेरा ऑडियंस यही अकेली है, इनके बहाने आप लोग सुन लेना। अभी यहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग दृश्य ताकत है, अब सब एक एक पर्सनैलिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन किरण जी यहाँ अदृश्य ताकत भी है। हमारे गुरु जी की कृपा है, करुणा का कृपा है। और मैं विपश्यना में भिक्खु संघसेना जी के कारण आया हूँ। यही मुझे गोयनका जी के पास लेके गए थे। मैं गया नहीं, ये लेके गए। ये मेरे घर आए और मुझे लेके गए। आई एम सो लक्की। मन ही नहीं कर रहा बात करने का। आप लोग सब मज़े से सुन रहे हैं, यही अच्छा लगता है, यही करुणा है। और मैं सिर्फ धम्मा गीत गाता हूँ। और हमारे यहाँ एक जनरल साहब भी पधारे हैं, मेजर जनरल साहब। लद्दाख स्काउट का रेजिमेंटल सॉन्ग भी मैंने बनाया। मैडम, एक पुलिस पे भी मैं गाना बना रहा हूँ, बिल्कुल, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, नॉट नाउ। तो संघसेना जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम लद्दाखियों को बल देते हैं। आपने लद्दाख के नाम को इंटरनेशनल लेवल पे आगे ले गया। और संघसेना जी का ये है कि हर लद्दाखी को इनकरेज करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक लद्दाखी ये सब फैक्टर असेंबल कर सकता है दिल्ली जैसे शहर में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं इनके पुण्य को देखता हूँ तो फिर को अपने आप को फिर नीचे फील करता हूँ, उस स्तर का बिल्कुल नहीं। कितने बच्चों को एम्पावर्ड किया, हज़ारों को इन्होंने पढ़ाया है, हज़ारों कॉलेज में है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। तो संघसेना जी, आपके करुणा का कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं पहला गाना ये गाऊंगा, अहिंसा परम धर्म
परम धर्म बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना। बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना। सबसे बड़ा धर्म है किसी को दुख ना देना। सुख के बदले सुख है, दुख के बदले दुख है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना। बुद्ध की है ये वाणी, सुनकर ध्यान करो तुम। बात लगे गर सच तो आजमा कर देखो तुम। गाइए, अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म है बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना। गाइए, बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना। सबसे बड़ा धर्म है किसी को दुख ना देना। थैंक यू। अभी किरण जी, गोयंका जी के कुछ दोहे आपको सुनाऊंगा जो टीवी पे 6-7 बार आया। हर हरकत की मूल में कारण सच्चा देख, हर हरकत की मूल में कारण सच्चा देख। बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक। कुदरत का कानून है, इससे बचा न कोई। कुदरत का कानून है, इससे बचा न कोई। अरे मेले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखी हुए। अरे मन के मैल उतार ले, जो चाहे सुख चैन। मेले मन दुखिया रहे, बोध हो या जैन। हर हरकत की मूल में कारण सच्चा देख। बिन कारण संसार में पत्ता हिले नहीं। क्या देखे पर दोष को, देखे अपना दोष। क्या देखे पर दोष को, देखे अपना दोष। दोषी चित व्याकुल रहे, सुखी रहे निर्दोष। देखें अपने चित्त को, देखें चित्त के दोष। देखें अपने चित्त को, देखें चित्त के दोष। दोष देखते देखते चित्त बने निर्दोष। हर हरकत की मूल में कारण सच्चा देख। बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक। गुरुजी चाहते हैं कि मैं बाद में कहूँ, ये सरमन से पहले कहा था तो उनके नसीब में भी था, लेकिन इसी में हम खुश हैं। हमारे गुरुजी फरमाते हैं, थापिया ना जाए कीता ना हो, आपे आप निरंजन सोए। विदाउट एनी एफर्ट, वट एवर आई गेट, यू आर ऑल वंडरफुल पीपल। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, नेक्स्ट गाना गाऊंगा वो इसलिए कि आप सबका एक गाना मैंने आप लोगों के ऊपर कंपोज किया है। सो आई विल सिंग ए सॉन्ग, बट I strongly recommend all of you to do a Vipassana meditation course that is liberating.
That will liberate you. Lectures, information will not liberate you at all. Practical. And 𝐸𝐚𝐽𝐸 ji has done this internationally. विपासना मेडिटेशन सब कीजिएगा. मैं किसी से तेज नहीं हूँ, मैं हर एक से अलग हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत विपश्यना करता हूँ. ठीक है, तो विपश्यना जरूर कीजिएगा. जय हिंद. Now we shall proceed with the address by dignitaries. First we have His Holiness Shatse Khensu Jangchup Choyden Rinpoche ji. Address. Sanghasena ji and all the distinguished guests, it is a great pleasure for me to be part of this very meaningful and precious gathering organized by the Mahabodhi International Meditation Center. As Venerable Sanghasena ji has already told us that the importance of the Mahakaruna is kind of becoming very needed and relevant in today's world. In general, compassion is a substance that is required in every individual's life, but particularly in today's world, when we are getting more and more interconnected to each other, and the entire world is kind of becoming like a small village. So the role of the compassion in Mahakaruna becomes much more important. So here I would like to recall that the great Acharya Chandrakirti of medieval ages has said that compassion is important and necessary in the beginning. Compassion is important and necessary in the middle, and compassion is important and necessary at the end. Without the compassion, there is no way someone can attain the Buddhahood. And without the compassion, there is no way the Buddhas will teach whatever they have learned or found. So, from that point of view, it's very clear that the importance of compassion for the human being was there from the beginning, even from 2,500 years ago, and in the medieval ages, and even today. From that point of view, we need this kind of events to be organized more often, so that we can kind of, arouse a sense of urgency in the public. And particularly we need to influence the decision makers on the global level to really kind of come up with a solid plan and way to implement to strengthen the compassion and Mahakaruna in society. Unless we do that, academic discussions and scholarly discussions may not lead us to anywhere. So the most important part is implementation, and Guruji, Guru Sanghasena ji, has been working very hard for all these years, and we all should support him. And I really kind of appreciate his role and
we should learn and try to support him and try to bring compassion in our own life so that our own life will be much more meaningful and worth to live, and then we can resonate it to other people, those are surrounding us. That is the way how we can bring in the compassion as a substance in the daily life. So with that, I would like to stop here. I don't like to take much time of you. All the great speakers were very eloquently spoken about the subject. So thank you very much with my prayers. Thank you. Thank you, sir. I would now like to invite Dr. Sandeep Marwa, founder, Asian Academy of Film and Television, on stage to deliver his short address. Very short. Very nice. Thank you very much, ma'am. Good evening, everyone. His Holiness, respected Bhikkhu Sanghasena, all the spiritual leaders, ambassadors and high commissioners, and my dear friends. Let me start with two very important lines. कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. What I'm trying to tell you here, that whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth, the fact is there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very auspicious day, let's pray, hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds, and through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe. I'm sure you will also believe in the same. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Kiran Bedi, IPS, former Lieutenant Governor, Puducherry, on stage to deliver a short message. Guruji and my spiritual friends, thank you for recognizing what happened in Tihar as far as the Vipassana meditation is concerned. It's a fact that it was history created, and when we started the Vipassana, we did not know history was being created. It started very, very briefly, I'm going to tell you, because you are hearing it, so you may know how it happened. It was just walking by the side one day when I used to walk the prison to find a solution to their mental agony of thousands of prisoners inside. Because after all, they all have to leave the prison one day, and we have to see that how do they get dry cleaned so they don't come back. My objective of this was, what do we do inside the prison so that they reform and don't come back? And Vipassana was one of the suggestions made by a prison officer who had done Vipassana. And he said, ma'am, आप ये करके देखो, करवा के देखो, इससे बहुत फायदा होगा, ये बहुत परिवर्तन आएगा. तो I said, अच्छा, साबित करके दिखाओ कि तुम्हें परिवर्तन आया. I called his family and his wife said, yes ma'am, ये बहुत गुस्से वाले थे, बहुत परेशान रहते थे, जब से इन्होंने विपश्यना की, इन्होंने बड़ा परिवर्तन आया. So that gave me an opportunity. Then we sought, and then Guruji was contacted, Vipassana Meditation Center in Igutpuri was contacted. Mr. Ram Singh Ji, who in Jaipur had conducted the course in Jaipur prison, he said, yes, it's possible, provided on one condition, that aap pehle officers ko bolo course kare. Then I chose about 7-8 good officers, who were difficult officers, angry officers, to do the course in Jaipur. And that experiment worked. And from that, history was created. When these prison officers came back, they said, yes, ma'am, this is a remedy for
problems inside a prison. And then we contacted 𝐻𝐞𝐚𝐤𝐽. And 𝐻𝐞𝐚𝐤𝐽, that's how Sri 𝐻𝐽 came himself, and Mataji. 𝐻𝐽 and Mataji, they both came with more than 60 Vipassana teachers and decided to hold a course for 1,000 prisoners. And that is how a course of 1,000 prisoners was done and history was created. A film on this is Doing Time, Doing Vipassana. Agar aapne kisi ne nahi ye film dekhi, please find the time to see it. It is doing the world history. Every Vipassana center around the world is showing this film at the conclusion of the Vipassana meditation course. And this is how it's establishing what happened in 1994. We are now in 2024. This happened in 1994. And the film continues to be shown in prisons around the world. In every Vipassana conclusion. I myself saw it again when I was doing Vipassana course this October in Igatpuri. So this is what happened, and it transformed. Prison was now an ashram. I did not know this would be possible, but this miracle happened because of 𝐻𝐽. And 𝐻𝐽 and Mataji stayed inside the prison for 10 days. All the teachers stayed inside the prison. For the first time, outsiders were staying inside the prison, breaking all the possible rules. All possible rules broken for a cause. And that is what transformed the prison. And on April the 4th, 1994, Vipassana Meditation Center was set up inside the prison. Inside the prison. And it's still running, friends. It will be good news that it's still running. The programs continue. But I didn't stop at prisons, Vipassana. When I went back to Delhi police, I took this program to the police officers also, because they were equally inside their own prisons of their own hearts and minds. And that is how it was taken to police also. While the program has remained inside the prison, and it continues to be a center, when what was set up in the police was broken down immediately after I left, because people who succeeded me thought that we don't need meditating police officers, we need beating officers. We would beat the people rather than feel for them. And that program got kaput. It got changed. So police officers who did the course with me were about more than 2,500 police officers who did the course. We have another film on that, and that film is called You Be the Sky, and it's available on my website. You can see it. So what I'm saying is, it came out of a solution of hard-hearted minds, hard-hearted, stone-hearted minds, stone-hearted hearts who needed a transformation, and Vipassana worked. And I have seen it works. I know what it means. I've done the course. I know what it means. I can divide my life into two parts easily. One part, when I was before the Vipassana. Who am I after it? And as we very rightly said, it is experiencing which tells you. I cannot theorize and teach you, but it's only when you experience the course and you go through this 10 days silent retreat, and of course go deep inside the body sensations and realize for yourself that you really realize what Vipassana, how Vipassana transforms. Thank you very much for this opportunity. Thank you so much, ma'am. I would like to invite His Excellency Mr. Moe Kong Ang, Ambassador, Republic of Union of Myanmar, to deliver a short message. Venerable Bhikkhu Sanghasena, venerable spiritual leaders, Excellencies, ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to deliver a message as a guest at this auspicious occasion of the celebration of Mahakaruna Diwas 2024, together with other dignitaries. At the outset, I would like to appreciate Mahabodhi International Meditation Center and Mahakaruna Foundation
for organizing this timely event. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Mahabodhi International Meditation Center and Mahakaruna Foundation celebrate the Mahakaruna Diwas on 7th January every year across the country and abroad. The celebration of Karuna Day marks a testament to the selfless dedication to serve humanity. This year's celebration of Mahakaruna Diwas will convey the message to the world that Mahakaruna, great compassion, is a path to global peace. Distinguished guests, ladies and gentlemen, recently we have been witnessing the spread of violence and the expansion of conflict in certain corners of the world. If we do not check it in time, there could be disastrous consequences for the future of humanity. With all the unprecedented environment of war and all the hatred, Mahakaruna, the universal compassion, seems to be the only solution. Buddha teaching will serve as a platform towards achieving this goal. Mahakaruna and Ahimsa, in brief, are to respect for all living things and avoidance of violence towards others. Thus, we shall recognize the value of all life and demonstrate the power of compassion to help humanity and to uphold the global peace. The elements of peace can vary depending on the context, but some common elements include mutual respect, understanding, empathy, justice, equality, and non-violence. I am sure that many people share my concern about the present worldwide moral crisis and will join in my appeal to all humanitarian and religious practitioners who share this concern to help make our society more compassionate, just, and equitable. As a human being and upholder of humanitarian values, I am certain that universal humanitarianism is essential to solve global problems, and compassion is the pillar of the world peace. With the goal of achieving world peace, peace movement is a social movement which seeks to achieve ideals such as ending of particular war or minimizing the human violence in a particular place or situation. Thus, I would like to put the spotlight on the urgent needs of practicing compassion through socially engaged Buddhism called Mahakaruna for the sake of innocent people across the world. According to the Buddha's teaching, compassion has some specific quality of self-sufficiency, of wholeness, of openness, of spaciousness, of resiliency, and of not being broken or shattered when facing states of suffering. Likewise, ahimsa has some ethical principle of not causing harm to other living things. The faithful follower of Lord Buddha have no doubt to practice Mahakaruna and ahimsa. Thus, with all the Buddha teaching in our mind, it is easy to embrace tolerance, empathy, and compassion as foundational principles resulting in peaceful coexistence. The present time calls us to strengthen our spiritual practice and deepen our refuge in Buddha and his teachings. Buddhists take refuge in Buddha to gain inspiration and right understanding for the self-purification. The Buddha was born to dispel the darkness of ignorance and to show the world how to be free from suffering and to live in peace and harmony. For more than 25 centuries, millions of people have found inspiration and solace in his teachings. Buddhist teaching emphasized to cultivate compassion and loving kindness. Myanmar is the most religious Buddhist country, and it is famous for large and graceful temples and pagodas. Buddhism is primarily practiced in most households, and nearly 90% of the population is Buddhist and is predominantly the Theravada tradition. Given the Buddhist heritage, Myanmar and India share close cultural ties and a sense of deep kinship. Myanmar and India have enjoyed age-old historical, cultural, and religious linkages, which also reflect people-to-people contact and interaction between the two countries. Consequently, Myanmar and India have
had a better understanding of spiritual expression even than before. Through promotion of culture and tradition between us, Buddhist circuit tourism and other religious cooperation projects will develop. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in conclusion, I am convinced that the teaching of Lord Buddha have been continuously flowing in our life. This time of uncertainty can be good opportunities for putting Lord Buddha's teaching into practice. Mahakaruna, which is the excess of Buddha teaching, can only bring peace in our life. Last but not least, I sincerely wish Mahabodhi International Meditation Center and Mahakaruna Foundation a great success and further progress while reaffirming Myanmar's utmost support and fullest cooperation to the noble objectives and gracious works of the center. I would like to conclude by extending my wishes. May Buddha Sasana be flourish and prosper, as well as Buddha's teaching of loving kindness bestow upon all humanity. May the association will be able to further be spreading the sacred Dhamma of Lord Buddha and further promoting harmonious and peaceful society throughout India and the world at large. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Thank you, sir. Now, we will be having a Dhamma song by the Mahabodhi students. Hello. On this auspicious day, also birthday of Venerable Bhikkhu Sanghasena, I'm very pleased to announce that the government of Union of Myanmar conferred the title Mahasadama Jyotika to Bhikkhu Sanghasena on the day of 4th of January, our Independence Day. That title is very prestigious in our country. It is conferred by the Prime Minister of Myanmar, but the selection is made by the Sangha Council of Myanmar, the highest body of Buddhist Sangha. So I would like to congratulate Bhikkhu Sanghasena and very happy birthday and many returns of the day. Thank you. Shining bright far and wide, like a light, wisdom light deep inside. Just be mindful and thoughtful, be useful and fruitful, like a light. Be a guiding light, be a guide and teach me right from wrong. Be the light, make me weak from strong. Just be truthful and faithful, respectful and peaceful. Shine, 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 peace to all mankind. Share love and care if you have. Share your care here and there, everywhere.
Just be helpful and careful, be thankful and grateful, share and care, love is everywhere. Be a guide and teach me right from wrong, be the light, make me weak from strong. Just be truthful and faithful, respectful and peaceful, shine, 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 peace to all mankind. Light, 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 shine, shine, shining bright like a light. I would now like to invite His Excellency Major General 𝐻𝐸𝐺𝐷 Namgyel, Ambassador of Bhutan to India, to deliver a short message. Good evening, Venerable Bhikkhu Sanghasena, all the spiritual masters and leaders, my colleague, the Ambassador of Myanmar, dignitaries, ladies and gentlemen. Mahakaruna, I think this is a wonderful initiative that Bhikkhu Sanghasena has undertaken. And how does compassion relate to people like myself, diplomats, ambassadors, or anybody who actually has to do a lot of work where Dharma practice may be quite difficult to go along with compassion. But what I would like to say is the seed of compassion is there in every person all over the world. And if that seed is sparked, nurtured, and if it sprouts, then it is the formula for peace and harmony in the world. How do we apply it? I'll just give a little, my own context. I'm a diplomat, I have to do tough negotiations, I have to sometimes get quite upset, but then I have to remind myself, be compassionate. Being compassionate is not being weak. Being compassionate is not comprising your national interest or your own personal interest even. Being compassionate will send out a positive energy, will keep you cool, calm, and you will be able to think more clearly and practice the Noble Eightfold Path, particularly right thought, right speech, and right action. That will be elevated by practicing compassion. It is not so easy to do, but we should all attempt to do it. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I would like to call Dr. Imam Umair Ahmad Ilaisi, Chief Imam, All India Imam Association, on stage to He's not here? Okay. I would like to call Shri Goswami Sushil Maharaj, National President and Convener of Bharatiya Sarva Dharm Sansad. Not. Shri Swami Chandradev Maharaj. Dr. Bini Sarin Brahma Kumari. Please come on stage, ma'am, and deliver a short message. Very, very special greetings of compassion, Mahakaruna, on this very special occasion. Today I would like to congratulate first of all our very respected brother Bhikkhu Sanghasena ji, and also on his very special birthday. What a fortune that he is celebrating, not that way, but giving the message to the world of compassion. We are all listening. I would like to take to you for few minutes, very short time, for the journey of Mahakaruna compassion meditation, because our all special dignitaries, they have already shared so much of knowledge, but it is the time to experience compassion in the silent moment. Before that, I would like to
give special congratulations and greetings from our Brahma Kumari's headquarters, Mount Abu, from our chief, because this is the need of the hour, that when we see around the war is going on, so much of violence is happening, but this is what a special place and very special occasion. Let's, from this place, we should spread the vibrations of compassion, peace, love. What is the meaning of compassion? Compassion means understanding others, listening others, accepting others, respecting others, and also cooperation. From where we should start our compassion? Where is the seed of compassion? The seed of compassion is in the soul, because the compassion, Mahakaruna, is the quality of the soul. And when we generate positive thoughts from our mind, so first of all, when we donate compassion, Karuna to others, we should strengthen our mind. When our mind is strengthened, then automatically our feelings, expressions, our words, our actions, all will be full of compassion. Compassion starts with C. To generate, to empower compassion, there is a need to delete from our mind 3 C's. First is confusion, second is criticism, and third is carelessness. And we have to choose, because 3 C's are important: check, choose, and change. If we feel that in our lives or other people, when they behave in such a way that it is difficult, be compassionate, give them respect, give them love. So 3 C's means, first, as our, very all honored speakers, they were saying, C means cheerfulness. So compassion means cheerfulness. So let's smile. Second C is confident. And third means compassion means care. So I request you, only for a few seconds, join me in this journey of meditation. Please use the music. Sit at the back straight. And turn your attention from outside to inside. Look within with lot of confidence. And positivity. Feel the energy within. Who am I? I am compassionate soul. Compassion is my true nature. Let us generate and create the energy of compassion, tolerance, peace, bliss, and respect in our own minds. I am the master and the creator of compassion, healing thoughts,
and healing energy to the universe, to the suffering humanity. It is the time to send the pure, peaceful, and positive vibrations to the world. The world needs the most. Let us take the positive determination today that we will be more and more humble, compassionate, and peaceful in our thoughts, words, and actions. Let us today give thanks and feeling of gratitude to the Almighty Supreme Soul, who is the ocean of mercy and compassion. Visualize and feel the presence of the Almighty here, and receive the energy, the flow of energy of compassion, peace, harmony, and brotherhood. Fulfill inside, and now we are ready to generate the peace. First of all, let us visualize around us our communities, our city, our nation, and all over the world. Be the ambassador of compassion. With these thoughts, today is the new beginning of the life. Care, compassion, concern and confidence, and cheerfulness. Today we are returning back with this special gift from this event, which is invaluable and forever. Om Shanti. Let peace in the self. Om Shanti. Peace in our families. Om Shanti. Peace in the world. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, we shall have a cultural performance by the Ladakhi Student Union, Delhi. Da
would like to invite Mr. Navratna on stage to deliver a short message. सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, एक्सीलेंसीज। और जितने भी बातें सुन रहा था मुझे लग रहा था कि मैं आज ऐसी जगह आया हूँ जो मेरे जीवन में मुझे कुछ बदलाव देके जाएगी। जो मेडिटेशंस पे बात हो रही थी, भूटान के जो सीड की बात कह रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की अंतस की गहराइयों में वो सभी के जीवन में है। मैं बीकानेर वाला से नवरत्न अग्रवाल हूँ, वन ऑफ द डायरेक्टर। हमारा परिवार 130 मेंबरों का परिवार है। हमारे बीच में कोई लिखा पढ़ी नहीं है। हम सब में एक ही बीच में एक ही बात है, हम सब बराबर हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। और कोई खर्चा ज़्यादा करता है तो भी तकलीफ नहीं है, कोई कम खर्च करता है तो तकलीफ नहीं है। वरना जहाँ दो भाई का टिकना मुश्किल हो जाता, आज 130 मेंबरों के बीच में हम सब एक तरीके से इकट्ठा हैं, सब जॉइंट हैं। कोई कहीं रहता है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई कहीं। तो आज हम सब एक, ये नहीं लगता कि मेरा 130 मेंबर का परिवार है, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। सूरज भी हमें लाइट दे रहा है, वायु भी हमें एनर्जी दे रहा है, जल के बिना भी हमारा जीवन नहीं है। तो पूरा ब्रह्मांड, हम सब भी कोई एनर्जी ब्रह्मांड को दे रहे हैं जब हम पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिविटी में कोई एनर्जी नहीं है। जैसे भूटान के इन्होंने कहा कि सीड, हमारे अंदर एक करुणा का सीड है, हमारे अंदर एक प्रेम का सीड है। हमारे को अपना परमात्मा, हमारे अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाता। हम परमात्मा के पूर्ण तत्व हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि हम कहाँ परम हैं। क्यों परमात्मा मेरे अंदर है तो वो जीवन है कहाँ, वो सत्य है कहाँ, वो आनंद है कहाँ, वो करुणा है कहाँ। जब हम उस बीज को अपने अंतस की गहराइयों में, जैसे मेडिटेशंस के द्वारा अपने अंतस में गहराइयों में अपने आप को अनुभव करेंगे, जब मुझे जीना आएगा, जब मुझे प्रेम के साथ में रत हो जाऊंगा, जब मैं ज्ञान के साथ रत हो जाऊंगा, तभी मैं इस जीवन को जान पाऊंगा। जब मैं करुणा में हो पाऊंगा, जब मैं प्रेम में हो पाऊंगा, जब मैं इस ब्रह्मांड को प्रेम करने लगूंगा और ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद का भाव आएगा, तो नेचुरली मैं भी कुछ देने लगूंगा। जब मेरे अंदर भी फूल खिलने लगेंगे। धन्यवाद जो इन्होंने मुझे आज स्टेज दिया और आज मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम, और हर प्रकार से, जिस प्रकार से लोग अपनी बातें कह रहे थे, सब अपने दिलों से एक भाव के रूप में जो कह रहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now we would like to honor Shri Navratna Agarwal, Director, Bikaner Wala. आप सब जानते होंगे, बीकानेर वाला स्वीट कौन नहीं जानता है, किसको स्वीट नहीं चाहिए। दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द बेस्ट स्वीट इन द वर्ल्ड। एंड हमारे लिए भी तो और भी स्वीट बन गया है। मिस्टर नवरत्ना, मीन 9 jewels, 9 gems. 9 gems is with us. And he's very much important, very important part of our Mahakaruna movement. And he's all the tea you are enjoying, the samaso you are all enjoying, everything is donated by him and his family, provided him. So we, on behalf of everybody, we thank you so much and invoke the blessings of the Lord upon you and your entire family members of 130. This is a historic, a very special family. हम लोग तो 2 आदमी वाइफ हस्बैंड रहने को मुश्किल होता है, 3-4 बच्चों के साथ रहने में बहुत मुश्किल होता है। 130 लोग इतना शान से, इतना प्यार से, है ना, प्रेम से एक ही घर में रहते हैं। तो something to learn from them. Is a role model to learn for peaceful family, harmonious family. Peaceful से रहना और साथ में बिजनेस करना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। Thank you, Venerable. I would like to invite Dr. Priya Ranjan Trivedi, President, International Association of Educators for World Peace, on stage to deliver a short message. Another very, very special person for everybody, especially
those who are involved in education program, knowledge mein. Dr. Trivedi is a storehouse of knowledge. ना जाने उन्होंने कितने किताबें लिखे हैं. And he is a great educationist. He's a great ecologist. He's a great environmentalist. He's a great peace activist. And more, much more. I can't do justice to introduce him. And he has been associated with us. It has been our fortune to have so close association with Dr. Trivedi Sahib. And we work together for Mahakaruna program, education and world peace. He's also the president of the International Association for the Educator for World Peace, and founder president of the Indian Institute of Indian Ecology, and so many, and chancellor of several universities. And now we have brought out, just released a wonderful book on compassion. There are not many books on compassion in actions. We are seriously discussing to establish an institute, Mahakaruna Institute, to do more research, and eventually we will produce a world standard book which can be introduced as a textbook in various educational institutions. We like to thank him and invoke the blessings of the Lord upon Dr. Trivedi Sahib for his long life and good health, perfect health, so that he can continue to guide so many people, and especially in the field of education and compassion. Thank you so much, Dr. Param Pavan Bhikkhu Sanghasena ji, Your Holiness Mr. Sanghasena, my dear friends, excellencies, chancellors, vice chancellors of universities, all religious leaders, spiritual leaders, ladies and gentlemen. It's a great day as well as an auspicious occasion when we are here to celebrate Mahakaruna Diwas, jointly organized by Mahakaruna Foundation, established at New Delhi under the guidance of Venerable Bhikkhu Sanghasena ji and the Mahabodhi International Center, Ladakh, where he is the president. Bhikkhu Sanghasena ji was talking about this book. It's a big project. We got about 1 week time and we thought we should bring out a book. It is 650 pages book, and more than 100 aspects of compassion has been discussed. We have certainly included the diplomacy and compassion relationship, including others. On this auspicious occasion, we have great pleasure in announcing on behalf of the Mahabodhi International Meditation Center as well as the Mahakaruna Foundation that a joint project has been initiated with the blessings of the heads of all governments, including the head of the Government of India, to give birth to a new institution by the name and style of Mahakaruna International University, with the legislative support of either the state government in India or the parliament. Till such time the legislation comes to our hand, this institution will be known as Mahakaruna Vishwavidyapitham, because there is a ban on using the word university unless the university is legislated. Even deemed universities cannot write university after their name. You have seen of late that more than 150 universities which are deemed one, they were barred to really not use the word university. And they had to overnight change their names. But there is no control on Vishwavidyapitham or Vidyapith or Vidyapitham. So it will work as an institution of higher learning where all types of training, formal, non-formal, informal, virtual, distance, open learning and regular programs will continue. I thank you for
attending this program, and we assure all our fullest cooperation to Bhikkhu Sanghasena ji for whatever work he is doing. I have given the full secretarial facility, and he can use it whenever he likes in Delhi, when there is a cooler environment in and around Leh Ladakh. Thank you very much. Jai Hind. May peace prevail on this Mother Earth. साहब ने बोला तालिया का कंजूस नहीं करना इतना अच्छा किताब लिखा इनके लिए तालियां नहीं बजेगा तो Thank you so much. I would now like to invite Dr. 𝐴𝐞𝐚𝐿, General Secretary of the Temple of Understanding India Foundation, on stage to deliver a short message. Dr. Merchant, also everybody knows he's another storehouse of knowledge. Wow. Whenever I listen his talk, I remember Osho Rajneesh. Osho Rajneesh was one human being on this earth can speak on any subject under the sky. And after that, he follows the Baha'i religion. The Baha'i faith. By faith. But he can speak on Buddhism or any other religion. So it has been our fortune to have the close associations, and we are always together for world peace, interfaith programs. And thank you so much for coming and joining us here. And a short message. Thank Yes, you. of course. Without your message. And when how you say come- short, I will surely will prove it. Excellencies, religious leaders, guests, distinguished friends, it's a short message. It's a birthday celebration of Bhikkhu Sanghasena, with whom I'm associated for now a long, long time, must be at least 25 years. Because it's a short message, I have a practical suggestion. You know, the United Nations has an International Day of Tolerance, which is 16th of November. Is it possible that through our consolidated efforts, we once again make a petition to the United Nations through one of the countries, where we can say that, could you please select one day from the 365 days for the International Day of Compassion? It can be done. In case that's not possible, there is another practical suggestion. Every first week of February is known as the Interfaith Harmony Week. So you have 7 days, and you can have 7 virtues. One of them could be compassion. So on this Mahakaruna Diwas, if a resolution of this nature is incorporated and presented either through the Government of India's Ministry of External Affairs or through some other favorable country, we have His Excellency from Myanmar, we had His Excellency from Bhutan, we had other excellencies who had to leave because of the paucity of time. So it can be done. And if we have an International Day of Karuna, it'll be really a great achievement coming from this collective efforts of all of us. So thank you very much. I don't want to say more, but we can continue our conversation, and it has been a great auspicious day, the Mahakaruna Diwas. Thanks to all of you, and most particularly the birthday venerable boy, Bhikkhu Sanghasena. Some liberty too. No, thank you. And of course, all of you know the Baha'i House of Worship, the Lotus Temple, it's permeated with compassion. Thank you very much, sister. We actually wanted to share this before, but 65 years old with diabetes, forgetting. And he reminded, for last few years, we have been seriously discussing how to approach United Nations to declare Mahakaruna Day. And with the help of IBC and others, excellencies and other peace-loving people or who believes in compassion, we do hope that we will achieve this one day.
one day we will have the International Day of Karuna. You have many international day for these and this. Why not Mahakaruna Day? Most important, I am sure. Thank you, sir, for reminding this. We will together, with your help, under your guidance, we will achieve Mahakaruna Day very soon, sir. Thank you. Thank you, Venerable. I would now like to invite Major General Dr. Yash Moore to read out the Mahakaruna Diwas 2024 Delhi Declaration. But before that, somebody has left their spectacles here. Okay. We have many special personalities today here. General Yashmore, Dr. General Yashmore, or General Dr. Yashmore. Major General. Yes. So General Sahib was serving in Ladakh, and he used to visit our ashram. We became very close friends, and then General is very special. Today he's one of the motivator speakers. He has millions of followers, and he is also the CEO, Chief Executive Officer of the Save the Himalaya Foundation, another our foundation, and he's truly a remarkable person, remarkable personalities. We are very fortunate to have friends association with so many wonderful people around us, and thank you so much. And General Sahib will now read out our Mahakaruna Diwas 2024 Delhi Declaration. And this is not just for declaration. We are determined, we together to achieve whatever we are declaring today. Thank you, General Sahib, for coming and joining. Thank you, Guruji. Thank you very much. Dhanyavad. Late in the day, lekin very important to read out the Delhi Declaration on Mahakaruna Diwas, New Delhi 2024. Guruji or Mera, we are like brothers born out of different mothers. My coming to Ladakh was a spiritual journey, or meri life kafi change. You can see my Ladakhi attire, which I wear it with a lot of pride. I love people in Ladakh, and कहीं ना कहीं ये पिछले जन्मों का रिश्ता है कि मैं जुड़ गया हूँ लद्दाख के साथ और हिमालयस के साथ. But without taking any time, बर्थडे ऑफ भिक्खू संघसेना जी, वो संघ सेना है और एक सैनिक से उन्होंने यहाँ तक अपनी ज़िंदगी में जो अचीव किया है, पूरी की पूरी फौज नहीं कर सकती जो इन्होंने अकेले किया है. Visiting his ashram is remarkable, really remarkable. So he is such great person, and I am honored to be, part of his team. We all honored. So I'll read out the Mahakaruna Compassion in Action Diwas 2024 was held on 7th January 2024. आज बहुत स्पेशल डे है in the auditorium of अध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर. ये फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त, हमें पता ही नहीं था इतनी खूबसूरत फैसिलिटी है. So the preamble is, we the participants of International Conference on Mahakaruna, organized on the auspicious occasion of the Mahakaruna Diwas, jointly organized by Mahabodhi International Meditation Center Ladakh, Mahakaruna Foundation Delhi, and Adhyatam Sadhana Kendra Delhi, gathered in Delhi, hereby present the Delhi Declaration on Mahakaruna by declaring our shared commitment to fostering Mahakaruna, great compassion in action for the betterment of humanity. So there are many charters to this. Firstly, recognition of shared humanity was visible with the kind of religious harmony we saw here. Integration into global education, promoting promotion of Mahakaruna in healthcare, very, very important. Empowerment of vulnerable communities, environmental stewardship through compassion. Our environment needs as much compassion as we have for other humans. Interfaith harmony and cooperation, love for other human beings. Government policies for well-being, youth engagement and leadership. We are connected to young people because हमें लगता है भारत का भविष्य भी उनके हाथों में है. So we have to keep young people in our midst. Cultural exchange and Mahakaruna festivals, research and academic collaboration. You have heard establishment of a Mahakaruna University in future. Mahakaruna in workplace. We need a lot of compassion in workplace. Global Mahakaruna network. Media campaign for Mahakaruna awareness. Very, very important that we reach out
through the media to everyone around the country and globe. Annual International Mahakaruna Day, it must be celebrated like Mr. Merchant said, a day can be nominated. So that mindfulness and meditation in Mahakaruna practice, Mahakaruna art and culture, elderly and Mahakaruna programs, regular conferences on Mahakaruna, so that this spirit of compassion reaches out to every part, every human being. Rallies on Mahakaruna, appeal to the heads of state with letter of peace to each of them so that they are part of this journey. Then we have special committee of vice chancellors of selected universities who take on the path of Mahakaruna. Training and awareness courses on Peace Foundation, Peace Education, specialized training on Karuna meditation, further promotion of Karuna meditation, formal, non-formal, regular and virtual sessions on Karuna medication, suggestions from religious and spiritual leaders, many of them were here, they blessed the entire crowd here. Students' participation is extremely important. Kindness, mercy, tolerance and compassion. All four words mean so much. Promote a culture in society which fosters kindness, mercy, tolerance, compassion. I always say number one quality of any leader is empathy. Empathy and compassion. So amazing. And periodic review and renewal. Commit to periodic reviews and renewal of the Delhi Declaration on Mahakaruna, ensuring its relevance, effectiveness in guiding global efforts towards a more compassionate world, and to generally do all that is required for promoting the cause of Mahakaruna. Let us hold our hands and join together to build one harmonious global family, a heaven on earth. Let us all join together to celebrate the beauty of life. Mahakaruna, love for all, hatred for none. Venerable Bhikkhu Sanghasena ji. Thank you. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, Janesa, for reading out this declaration so precisely and clearly, like in a voice of lion. Your voice is like lion roar. Thank you. Janesa reminded me just before I became a monk, as a soldier, I served in Indian Army, and I served in both the places where Kargil war took place on the Kargil and China, where just 2 years back, a serious war-like tension was built up. In both the places, I had the honor to serve. And then after decades, 30 years, the chief of army invited me to the army headquarters to honor for my little service as a soldier. I was surprised, and I got the invitation in 𝐸𝐴𝐺𝐻 name. So it was a really great place where I met General Sahab, also our ambassadors from Bhutan also I met. It was really great experience. Thank you, General Sahab. And I wish that everybody should serve in the Indian Army for a few years. From the beginning I have been telling that at least few years everybody should serve. I was not mentioning the 4 years, but when I heard this 𝐸𝐴𝐺𝐻 scheme, and I have been jokingly telling everybody the 𝐸𝐴𝐺𝐻 scheme was started by me because I served only 4 years. And thereby, more people will have chance to serve there, more people now. Thank you, General Sir. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you, Thank sir. you. General Sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yeah, we'll take it. I would now like to invite Dr. Nancy Juneja, founder and CEO, Rev Life Skills MentorX. Dr. Nancy is another remarkable, great person, great motivational speaker in all the fields. And they have a wonderful school. Last year we celebrated Mahakaruna in their school. Oh, this wonderful staff and students, and she also visited Ladakh. And she's truly a remarkable person, great motivational speaker. Yeah? Thank you. It is our great pleasure to have you present here. A very good evening to August gathering, His Excellency, policy makers, I guess Indian Army, meditative words, spiritual people. I feel each and every domain is right here today in the platform.
And I feel this is wonderful that me being introduced by, I feel His Excellency, His Holiness himself on his birthday. What a pleasure. I'll just say, got a chance to visit Ladakh. Definitely, I'll invite my students and my dignitaries who are here to come along. And it was a life-changing, path-breaking moment to visit Sir's domain, be it, old age home, be it hospitals, their schools, their ashram, each. Trust me, India will be again that Sone ki Chidiya. Bharat will be again known for that spirituality, Sanskriti, which is still known as that. But again, we'll be the top always in etiquettes, and the Western world will follow us rather than the vice versa, which is happening right now. So I request both of the students who've been awarded here, and even, the dignitary, to just be here for a moment. I have not seen any event in which honorable policy makers as well as students are being awarded. Avirat Jain, 𝐻𝐿 Juneja, and even our respected Anju ma'am. So this is really nice. A line, how did you feel the experience for Mahakaruna Diwas? I'll request the students to come first one by one, and then just one. Before I start, I would like to say, Dharam is Jeevan ka sahara hai. I believe each and every religion is connected with each other. Let's take an example. Right now, each and every one of us, in the starting they said that we should help people. Yes, we should help people on the roadside. We should give to people, exactly. Because rather than going to temple, we should do good deeds. I believe that good deeds makes us closer to God than going to temple itself. Being a man of God means to worship Him, to do what He wants to do. Thank you. Wonderful, wonderful. Thank you. Thank you to Guruji. Thank you to Guruji. Do it yourself. When you are kind, it doesn't mean that you are kind only to the person you are being kind to. You are kind to the whole world. You are kind to the person you are meeting, their family and everyone. They are thankful to you. A very pleasant evening to all. I am 𝐻𝐿 Juneja, a global public speaker. Say thank you, Guruji. Thank you. Yeah, you global. I feel now this is remarkable, being the Compassionate Award. Please go ahead. I am being awarded for many academics and extracurricular activities, but it is the first time I am being awarded for my kindness. So hereafter you have to speak on compassion. Yeah. So Kindness what is and compassion. for you? What is kindness? Wonderful, wonderful. Thank you. Thank you. I would give a message to the youth that a little impact can change someone's life. If you do a little kind, and yes, I am going to NGOs, I am going to orphanages from the age of 4. I have been helping animals by going to animal center and giving them food regularly. Very good, very good. You have to visit Ladakh now, Thank you. Come, wonderful. गुरु जी को नमस्कार और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिट्टी से जन्मे मिट्टी को आकार दीजिए, जियो और जीर्णोदय के भाव से मेहनत से अपने सपने साकार कीजिए, अपने भीतर के दरवाजे पर दस्तक दीजिए, दया प्रेम करुणा और धैर्य से अपने ओर में स्थान दीजिए, निस्वार्थ सेवा दया भाव से जीवित रखिए। क्षणिक है जीवन, अच्छे कर्म और सच्चाई से आगे बढ़ते रहिए। फल का लालच त्याग कर बस कर्म कीजिए, दया मानवता संस्कार परोपकार इंसानियत से जीवन का मर्म समझिए। जन्म मिला है तो इसे सफल बनाकर जाएं, दूसरों की खुशी बनकर जाएं। जाने के बाद जिनके धरती शोक मनाए और आकाश आंसू बहाएं, ऐसा उदाहरण बनिए, राष्ट्र हित में सुंदर परोपकार दया धर्म के काम कीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे परम पूज्य चिदानंद स्वामी जी का हमें मैसेज प्राप्त हुआ है और नंदिनी जी हमारे साथ में हैं, तो वो जस्ट शी विल रीड आउट द मैसेज। I'll actually quickly just paraphrase it because I think a lot has been said on compassion already. Pujya Maharaj Shri Pujya Swami Chidanand Saraswati Ji Maharaj, who is the president of Paramatma-Niketan Rishikesh, had met Venerable Bhikkhu Sanghasena Ji a few days ago in Gujarat, in Ahmedabad,
and wished him a very happy birthday. And Venerable Bhikkhu Sanghasena ji had told him that he must come. And as much as he wanted to be here, his tickets had already been done, so he wasn't able to be here physically. But I think what I would just say is Pujya Swamiji has great love and great affection for Venerable Bhikkhu Sanghasena ji, and there's so much beautiful work that we've done with the Mahabodhi International Meditation Center. And we look forward to working together with Venerable Bhikkhu Sanghasena ji for the work we're doing for the Global Interfaith WASH Alliance. And we've spoke about compassion, but I think Venerable Bhikkhu Sanghasena ji really is compassion in action. And whether it's water and sanitation hygiene, climate change or environmental sustainability, whether it's work for providing children with toilets, we've been working with MIMC for a number of years to bring these services as compassion in action. And we look forward to continuing this work together for WASH, for making sure that every child has a healthy and happy future. And I would also like to say कि now एक बार हम साथ में मिल करके भी not only climate change के लिए काम करेंगे, WASH के लिए तो काम करते आए ही हैं, लेकिन अब बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करेंगे. तो मेडिटेशन के साथ साथ उनको मेडिकेशन नहीं लेना पड़े और उनको वैक्सीनेशन ज़रूर हो, क्योंकि 5 साल से कम आयु के बच्चे 7 बार उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए. अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं होती है और उस कारणवश they are not able to live to the infinite potential. So we would love to work together for everything that we have been doing so far, but also for routine immunization. And next time, Mahakaruna Diwas can maybe happen in Rishikesh. Yes. I've been thinking. That would be wonderful. It would be a little cold, but you know, din mein it's beautiful and sunny, and it's only 3-4 hours from here. So we continue to work together. And you are such a beautiful example of compassion in action. You know, Pujya Swamiji says एक बात है कि गुफा में जाके आप ध्यान करो, और दूसरा है कि उस ध्यान को समाज में ले आओ और समाज के लिए सेवा करो, और वही ध्यान है. So thank you so much for your beautiful example. Pujya Swamiji wishes you good health, long life, and may you continue to bring Karuna to every corner of this planet. Together with the blessings and guidance of Swamiji. Swami Chidananda ji and Sadhvi Bhagwati ji has been a great inspiration for me. Ever since I met them, you know, I learned so much from them. I got so much inspiration from them. And we work together with Swamiji. Swamiji gave me so much opportunity to travel together, to participate in many programs, and I learned so much. And I'm extremely grateful to Swamiji and Sadhviji and all of you, and very much looking forward to have this close association, even greater, stronger relationship to work together. And we also look forward Swamiji's your visit to Ladakh next summer. We missed the visit of Swamiji for last few years. Yes. We want Swamiji to visit at least one time to Ladakh. And thank you, especially thank you. Thank you. This is Pujya Swamiji's message, which I've sent you by WhatsApp. मीडिया से हमारे यहाँ पर कुछ पधारे हैं भाई. संजय भाई जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पर आएँ. और दूसरा डॉक्टर रंजीत कुमार गुरु जी, उनका सम्मान करना चाहेंगे. जमील रहमान जी भी आ सकते हैं, और रिंकू यादव जी. आप चारों लोग आ जाइए. राजकुमार गौतम आवाज इंडिया से भी आया हूँ, जो हर साल हाँ. और राजकुमार गौतम जी जो आवाज़ इंडिया से हैं, और पीएमसी से भी कुछ लोग हैं. मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आएँ और गुरुजी उनका सम्मान करेंगे. आइए सब लोग.
We are also very happy, some devotees, Madam Shantabin, along with delegation, came all the way from Gujarat. Thank you, Karuna Khatak. We like to really thank you for coming and joining. Bini Sarin Brahma Kumari and Rakesh. Dr. Bini Sarin Brahma Kumari and her brother, Mr. Rakesh, would like to honor Venerable Bhikkhu Sanghasena. और गुजरात आइएगा जरूर ठीक है कार्यक्रम वही रखेंगे गुरुजी ने बोला था ठीक है ये मेरा कार्ड है Thank you. एज है आपकी? How much do you think? I think 20-22. 29. I cannot beat you also, you are venerable. To extend my deepest gratitude to every one of you for gracing us with your presence. May the ripple effect of our collective endeavors continue to resonate in the world. Thank you. Here's Baishali Sarkar signing off.